Hello. Welcome to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, I am before time. I am before time for a change. I think technically 1 minute schedule करने से पहले मैं आ गया हूँ और इसीलिए I don't see a lot of people. लेकिन I'm pretty sure और लोग जुड़ने वाले हैं तो stick on जो भी है. Thank you join करने के लिए and yes, do put in your comments your predictions. Big game tonight. हाँ, आप बोलोगे बिग गेम क्या है यार, मतलब जैसे केडीबी ने बोला है, it's a set of glorified friendlies. That is what UEFA Nations League is. But is it really? जैसे मैंने कल भी बोला था, it is not about that because मेरे ख्याल से it is a World Cup year. तो I think the more the countries play एक दूसरे के साथ उतना ही पता चलेगा कौन कितना पानी में है और वही I think देखने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ और इसलिए हम वॉच अलोंग कर रहे हैं और उतना ही नहीं. There is a lot of news. लिटरली इतने सारे न्यूज है. आई एम थिंकिंग यार हर एक घंटे में वीडियो निकालनी पड़ेगी, इतना सारे न्यूज है. सो आई थॉट बेस्ट वे इज यार वॉच अलोंग पे आओ, मैच देखो और साथ साथ में डिस्कस भी करो. तो दैट इज व्हाट आई बिलीव इन और प्रीटी श्योर कि आप लोग भी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट एज वेल. लेकिन हाँ साई, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. ऑलवेज गुड टू हैव यू. सेम विद टॉक एंड यू ब्रदर, बिग अप टू यू एज वेल. एंड प्रबलजोत इज हियर. मैच कब शुरू होगा? टेक्निकली 10 मिनट बाकी है, अभी 10 मिनट बाकी है. लेकिन अब हाँ, वी ऑल नो कि यार इट्स अ फर्स्ट मैच ऑफ नेशंस लीग ए, जो इंपॉर्टेंट लीग है. और जो भी कल अटेंड नहीं किया था ना मेरा प्रीव्यू शो अबाउट द नेशंस लीग एंड अबाउट द फिनलिस्मा, यहाँ पर क्विकली मैं बोलना चाहूंगा नेशंस लीग क्या है फॉर पीपल हु डू नॉट नो. बाय द वे देयर आर 55 टीम्स. ठीक है, यूएफा नेशंस लीग है, 55 टीम है. ठीक है, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू व्हाट 5 लीग्स. नेशन लीग ए, बी, सी, डी और ई. वो है 16 16 16 16 7. तो 16 into 4 plus 7 teams is what 5 leagues makes up. पहला लीग जो है लीग ए इज व्हाट वी आर इन. ठीक है, वो हम कवर करने वाले हैं. वाई बिकॉज लीग ए काइंड ऑफ डिटरमाइंस कि आपका चैंपियन कौन होगा 2023 में. अच्छा, ये तीसरी बार खेला जा रहा है. पहली बार इफ यू रिमेंबर पोर्चुगल वन इट. यस, आज जो खेलने वाले अगेंस्ट स्पेन. The second time obviously Portugal beat my favorite Netherlands team. लेकिन second time मैंने कल थोड़ा सा I think जल्दबाजी में बोल दिया था. It was basically yes France who won it, लेकिन they beat not Belgium, they beat Spain. तो it's interesting है ना, दोनों नेशंस लीग के फाइनलिस्ट काइंड ऑफ किकिंग ऑफ द लीग ए के मैचेस काफी इंटरेस्टिंग होंगे. और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको क्या है द ग्रुप्स इन लीग ए, बिकॉज देयर आर 4 ग्रुप्स और चारों ग्रुप्स के जो विनर्स होंगे दे विल प्ले द फाइनल्स 2023 जून में. एंड देन विल हैव द विनर. बट अंकुर पटेल इज हियर. व्हाई फ्रांस इज नॉट इन एनी ग्रुप? फ्रांस इज इन अ ग्रुप, एब्सोल्युटली दे आर. बिल्कुल है, मैं दिखाना चाहूंगा अंकुर. जस्ट एक मिनट दीजिए, आई जस्ट टेक अ कपल मोर कमेंट्स. माय प्रेडिक्शन स्पेन 0 पोर्चुगल 2. अगेन एवरीवन एल्स पुट इन योर प्रेडिक्शंस. मेरा प्रेडिक्शन देता हूं मैं क्विकली. और मैं टीम्स भी दिखाऊंगा, लेकिन क्विक प्रेडिक्शन मेरा है यार डेफिनेटली इट इज इन स्पेन, इट इज इन सेविया. और जस्ट सो एवरीवन नोज, आई थिंक स्पेन एंड पोर्चुगल लास्ट तीनों बार जब खेले तीनों बार ड्रॉ हुआ है. 2 बार 0-0 ड्रॉ हुआ है. दोज वर फ्रेंडलीज एंड वन वाज अ 3-all ड्रॉ. इफ आई रिमेंबर राइट इट वाज वर्ल्ड कप था क्या? आई थिंक इट वाज अ वर्ल्ड कप. यस, इट वाज द लास्ट वर्ल्ड कप जहां पर वो भिड़े थे 3-all ड्रॉ. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अद्वै इन द हाउस. अद्वै, ऑलवेज गुड टू हैव यू भाई. मतलब Vamos Espana. Okay, we have Spain fans in the house as well. Brilliant. लेकिन हाँ, everyone getting your predictions. Spain versus Portugal, it is happening in Seville. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और यहाँ पर बिफोर लुकिंग एट द टीम्स मैं दिखाना चाहूंगा द ग्रुप्स, क्योंकि यार अंकुर हैड अ डाउट. तो लेट मी क्लैरिफाई दैट क्विकली, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया फॉर पीपल जॉइनिंग लेट व्हाट इज नेशंस लीग एंड द फॉर्मेट. ठीक है, अभी जो ग्रुप्स है वो दिखा देते क्विकली. क्या मैं शेयर करूं भाई? ये रहा. चलो ये रहा, मिल गया. तो आपको दिख रहा होगा. सिंपल विकिपीडिया का शेयर पेज शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर देखिए. तो दिस इज व्हाट वी आर इन ग्रुप A2. ठीक है, वो एक क्रूशियल आज के लिए. लेकिन वी विल टेक अ लुक एट ग्रुप A1. तो फ्रांस इज डेफिनेटली देयर. कल है फ्रांस भिड़ रही है डेनमार्क के साथ. हम वो भी शायद कवर करेंगे डेफिनेटली. और होपफुली मेरी टीम नेदरलैंड्स है, वो भी शायद थोड़ा सा कवर कर लेंगे. आज मेरे ख्याल से अच्छा मैच ऑन पेपर स्पेन पोर्चुगल. सो दैट्स व्हाट वी आर कवरिंग. ठीक है, लेकिन हाँ, एनी अदर मैचेस के स्कोर्स यू वांट टू शेयर, डेफिनेटली फील फ्री टू शेयर. लेकिन यहाँ पर बिफोर टेकिंग मोर कमेंट्स एंड टेकिंग योर प्रेडिक्शंस एज वेल, यार मैं तो मेरा प्रेडिक्शन पता नहीं मैं बताया कि नहीं. आई थिंक आई मिस्ड इट. हाँ, डेफिनेटली आई एम गोइंग विद लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर लाइनअप. इंटरेस्टिंग. मैं जाना चाहूंगा भाई अगेन. मतलब शुड आई गो फॉर अनदर ड्रॉ? नहीं यार, आई वोंट स्टे ऑन द फेंस. मैं जाऊंगा यहाँ पर यस पोर्चुगल टू बीट स्पेन अवे. मैं बोल रहा हूँ पोर्चुगल टू बीट स्पेन. हाँ, आप बोलोगे मेसी ने बवाल मचाया कल. ब्रिलियंट. कंग्रेचुलेशंस टू द गाय, कंग्रेचुलेशंस टू अर्जेंटीना. फुल रेस्पेक्ट. लेकिन
what about Ronaldo? Ronaldo, has he having anything जो नहीं फिनिश किया उसने? कम ऑन, ही डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग. लोग बहुत लोग बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ मेसी डूइंग दैट रोनाल्डो आज टर्न अप होगा. ऐसे नहीं चलता है भाई. मतलब ही बोथ आर गुड्स. लेकिन हाँ, डेफिनेटली पोर्चुगल की स्क्वाड बेटर है. तो यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ आपको क्या है लाइनअप. ठीक है, यहाँ पर क्विकली लाइनअप दिखा देते हैं. और जो भी ज्वाइन करिए यार, लाइक कर दीजिए जल्द से. और अगर आप शेयर कर सको तो ब्रिलियंट यार. जस्ट रीट्वीट माय ट्वीट, नॉट द ट्वीट विच हैज बेसिकली मेरा वीडियो, बट द ट्वीट विच हैज द लिंक ऑन यूट्यूब. वो काफी इंपॉर्टेंट है. लेकिन हाँ, like on Instagram as well, brilliant. Almighty Blues FC on both the social media, absolutely. यहाँ पर कौन सा मैं शेयर कर रहा हूँ भाई, ये रहा. चलो, तो आपको दिख रहा होगा hopefully. Yes, again, any content creators out there who would like to join me, you can message me personally, then we can bring you on if there's room. लेकिन absolutely यहाँ पर मैं सोचा आज I'll spend a lot of time with you guys. So yes, very importantly, स्पेन ने गोलकीपर अपना चेंज नहीं किया है. तो अगेन आप कमेंट करिए. Unai Simon, we know that उसने एक बवाल मचाया था यूरोज में, लेकिन अदर देन दैट ही इज डिसेंट. एथलेटिक के कीपर है, काफी अच्छे कीपर है जनरली स्पीकिंग. पाउ टोरेस, मैं बोल रहा हूँ यार चेल्सी को लाना चाहिए. मैन यूनाइटेड से लिंक है बहुत स्ट्रांगली. जॉर्डी अल्बा, नॉट मार्कोस अलोंसो. एंड यहाँ पर एंथम शुरू हो गया बाय द वे. Lorente of I think Leeds plays at centre half position, and you have Azpilicueta, captain fantastic from Chelsea. Gavi, Busquets and Soler, बहुत ही इंटरेस्टिंगली नॉट कोके. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोके खेलेंगे. सराबिया, मोराटा और टॉरेस, वो तो शायद एक्सपेक्टेड था. हाँ, बहुत लोग बोलेंगे यार फाटी खेलना चाहिए, बट अब मे बी फाटी कम्स ऑन. आंसू फाटी, ग्रेट टू एक्चुअली सी हिम. पोर्चुगल इंटरेस्टिंग ऑन पेपर दिखा रहा है कि रफाएलिया विल बी प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड. मुझे लगता है इट विल बी सिल्वा ऑन द राइट हैंड साइड, रफाएलिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. आंड्रे सिल्वा सेंटर फॉरवर्ड इंटरेस्टिंग. रोनाल्डो शुरू नहीं कर रहे. ब्रूनो फर्नांडिस, जाओ मुटीनियो और ओटावियो. जहां यहाँ पर मेरे नेबर्स के डॉग्स बात कर रहे हैं, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. आई होप यू कैन स्टिल हियर मी, बट या दिस इज व्हाट इट इज. सो फॉर मी की एलिमेंट क्या है? स्पेन का भाई बंद हो जाए यार. तो बेसिकली सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट, बट समझा करो यार, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. एनीवे, अल्वारो मोराटा अगेंस्ट डनीलो परेरा और पेपे. Pepe has been brilliant, लेकिन we all know at his age he can make a mistake, he can be a bit slow. Danilo Pereira मेरे ख्याल से is not a pure centre back as much as वो Portugal के लिए खेलते हैं. I don't see him as centre back, he's more of a CDM. Cancelo on the left hand side ज़्यादा effective है versus right hand side. तो मैं बोलूँगा Portugal में भी opening से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ Portugal जीतेगी फिर भी because of that attack जो हम देख रहे हैं 2-1. And it'll be an interesting game. मैं बेंच पर भी आऊंगा. Before coming to the bench, obviously I'll take a few comments. नहीं तो लोग बोलेंगे भाई भूल गए क्या हम लोग को. चलो आते हैं यार कमेंट्स में, और आपके प्रेडिक्शंस भी लूंगा मैं. एब्सोल्युटली चेल्सी आर रियली स्लो इन द ट्रांसफर्स. नहीं भाई गौरव, थोड़ा न्यूज है, हम बात करेंगे उसके बारे में. एब्सोल्युटली मैंने सोचा है बहुत बात करेंगे, इसलिए मैं अकेला हूँ क्योंकि आई लाइक टू शेयर लॉट ऑफ ओपिनियन. सोनी पे 10-1 आज 10-1 पे ही है, और बाकी सब में रोलैंड गैरोस आ रहा है. अच्छा यार बताइए, रोलैंड गैरोस और फ्रेंच ओपन में डिफरेंस क्या है? इज देयर अ डिफरेंस? मतलब रिसेंटली मैं बात कर रहा था किसी से, वो लोग इंसिस्ट करते थे रोलैंड गैरोस बोलो, फ्रेंच ओपन नहीं बोलो. अलग है, पता नहीं. मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो मैं तो फ्रेंच ओपन बुलाता हूँ. मे बी आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी. अगेन यार जरूरी नहीं मैं हर स्पोर्ट्स के बारे में हर चीज जानूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. लेकिन हाँ, सोनी 10-1 is what the channel is. Everyone is Ronaldo on the bench. Absolutely, Ronaldo has to be on the bench यार. मतलब it is a landmark game for him as well, for sure. So Ronaldo is on the bench. हम दिखाएंगे. Kunal, just give me 1 minute. I'll take a few comments. Portugal are looking understrength, Shrey, but we all know it. Portugal or France, arguably, I think those two, मेरे ख्याल से, along with maybe England as well, on paper have the best squad. I really believe it. मतलब they have the best squad. हाँ, England का manager is a problem. Portugal का manager is a problem. France का I think they are much better. तो वो मेरा opinion. But again, if you feel that, fair enough. हाँ, 11 starting 11 again is Nations League after a long season. तो आप expect करते हैं यार, मतलब honestly speaking, भाई आज बहुत ही डॉग्स है यार. मेरे नेबर्स लोग क्या पता नहीं ऑफेंड हो रहे क्या मेरे नेबर्स, पता नहीं. कोई नहीं. आई होप यार you guys are able to hear me fine. I'm hoping there's not much disturbance with the dog barking, but again big up to the dogs. Hello Ankit bhai, मेरी अटेंडेंस लगा दो जंकी यार. थैंक यू always good to have you as well. Yes absolutely भाई, ये भी है. मैं मेरा आर्गुमेंट वही है भाई. मैं फ्रेंच ओपन बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट क्यों कर रहे हैं? रोलैंड गैरोस, पता नहीं यार, पता नहीं. मतलब कुछ लोग होते हैं भाई, वही बुलाओ, पता नहीं क्या है. I know, but last time you were okay. Interesting. Adway, we'll take that. Luis Enrique. Okay, Luis Enrique, you are supporting Samim, obviously being a Spanish fan.
Also, like I have my question marks with Luis and Enrique and Morata को back करते हैं. Go big up to him. Uh, yes, I know that CVC deal has been refused. मतलब again huge news, but again, is it the end of the world? Maybe they'll negotiate again. मतलब मैं तो बोल रहा हूँ. Why Luis? I have no idea. भाई. I have no idea. Honestly, मैं बोलूँ तो Unai Simon is more like an overall, a better all-rounded goalkeeper. ठीक है, versus the David De Gea. That's all मेरा argument होगा. But मैं तो any day David De Gea को लेता है. Even Kepa भी नहीं है, bench पर. It's kind of very weird. He's not even in the squad. अंकित भाई, one advice: never ever trust Mohak. Why भाई? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? Mohak भाई is my brother यार. Why not? Again, मतलब see, it's about basically respecting something that even if you disagree. अरे यहाँ पर मैच शुरू होने वाले, predictions डाल दो, सब लोग अपने स्कोर predictions डाल दो, देखते हैं किसका सही होता है. मैं बोला 2-1 पोर्चुगल. मैं खाली 2 predictions देखा हूँ यहाँ पर. सब लोग स्कोर predictions डाल दो. अब मैच शुरू होने से पहले डालोगे तो बेटर है. इतना मैं बोल सकता हूँ. लेकिन हाँ, definitely we'll see who's getting the right one. लेकिन and who are the goal scorers. Let's put that as well. ठीक है. लेकिन यार मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. मतलब अगेन आई थॉट आई नॉट एड्रेस इट, बट आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू एड्रेस एट द सेम टाइम. यहाँ पर किक ऑफ हो गया यार. मैंने एक पोस्ट डाला था भाई. आप लोग मतलब कुछ चंद लोगों के कारण basically I have been forced to correct myself or explain myself. Do I really need to explain myself if I have an opinion? No. Do you really need to explain yourself if you have an opinion? No. As in, two different opinions can definitely coexist. That is reality. और वो जब सब फैंस को समझ में आ जाए ना, फुटबॉल will be such a good place to basically talk and discuss. Absolutely. और हाँ, 90% आप लोग बहुत सही हो. वो बेसिकली वही है, 5-10% जो है ना बेसिकली है कि यार आप पहले 3 वर्ड्स कोई पोस्ट का पढ़ते हो और आप बिलीव कर लेते हो और अनसब्सक्राइब कर लेते हो. ये कोई ढंग है क्या? मतलब आई डोंट रियली बिलीव इट. यहाँ पर मैं ना पापड़ बेल रहा हूँ, 400 वीडियोस किया हो 1 साल तक, वो कुछ नहीं. और एक 3 वर्ड क्या. और आप सपोर्ट भी करो, जो अनसब्सक्राइब किया सपोर्ट भी किया पिछले महीनों में, और सडन से आप 1-3 वर्ड पढ़े और बस हो गया यार. पूरा पोस्ट तो पढ़ो आप. बट एनीवे, मेरा हो गया मिनी रैंट. I wish Dembele signs for Chelsea. Yes, we will be talking about that as well. I have a few things that I have in mind. Pep will coach Spain in future, at least for the next 7 to 8 years. नहीं, क्लियरली मैं बोलता हूँ, एटलीस्ट 7-8 साल, मे बी 10 साल में बोलता हूँ. नहीं, मे बी यार एकदम बुढ़ापे में मे बी डज नथिंग अगेंस्ट कोचेस कोचिंग नेशनल टीम्स. लेकिन वही है, आई डोंट सी हिम एज वन हु विल बी वेटिंग. मतलब इतना पेशेंस नहीं है टू वेट फॉर सो मेनी मंथ्स फॉर अ मैच. मुझे नहीं लगता है ही हैज इट इन हिम, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम. ही इज ग्रेट. He's a superb coach. Before people judge me again, हर एक सेंटेंस के बाद में डिस्क्लेमर क्यों डालना पड़ रहा है यार. मतलब कम ऑन Ankit, just be yourself. Chelsea having big day today. Arsenal and Chelsea offered from PSV for 30 million. Interesting. I'm not sure about this one. This is news to me, by the way. Let's see. I'm just looking at basically the market value of this player, Cody Gapco. अच्छा, तो basically let me actually take a look. As per transfer market, मैं देख रहा हूँ उसका market value क्या है. I know that he is basically an adaptable player. अरे भाई, कितने dogs यार, कितना बस करो यार, बस थकते नहीं हो क्या आप लोग? कोई नहीं यार, मतलब थोड़ा सा म्यूजिक चला देते हैं बैकग्राउंड में. होपफुली यू गाइस. अरे भाई, मैच स्पेन का बढ़िया चांस हो गया गोल. अरे नहीं यार, बच गया. डिफ्लेक्शन. गावी ने मस्त शॉट मारा एंड कॉर्नर. भाई साहब, क्या स्टार्ट है स्पेन का, ब्रिलियंट स्टार्ट. लेकिन यहाँ पर मैं देख ही रहा हूँ. हाँ, थोड़ा सा मैं हो सकता हूँ थोड़ा सा फ्यू सेकंड लेट हूँ, क्योंकि आई एम मल्टीटास्किंग आज अकेले. So let's see if I can search for this guy's market value. तो इसका market value है, कॉर्नर लिया नहीं. अरे नहीं यार, स्पिल कर दिया. कॉस्टा है ना गोलकीपर पोर्चुगल के. अरे भाई साहब, स्पिल कर दिया. He was lucky. I must say he was lucky, man. He was absolutely lucky. अच्छा, मैंने गलत स्पेलिंग दिया. गैक्पो है ना इसका नाम. अच्छा, गैक्पो का अच्छा, तो इसका है 25 मिलियन यूरोज है मार्केट वैल्यू एज पर ट्रांसफर मार्केट. ठीक है. ऑब्वियसली ही इज मोर ऑफ अ विंगर रियली, इफ यू आस्क मी. लेकिन अच्छा, एमरसन रिपोर्टेडली प्लीज टू बी बैक लिवरपूल सीइंग. ओके, इंटरेस्टिंग. लाइक अगेन लॉट ऑफ न्यूज फॉलोइंग. मतलब आज बहुत ही ज्यादा न्यूज आ रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट, द वे टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. लेट्स सी, इट बी इंटरेस्टिंग.
Simon better ball control. हाँ मतलब वही है, मतलब overall better ball control, even playing with the ball he's much better. Distribution भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा better है, लेकिन at the end of the day shot stopping में he is question mark for me compared to David. Absolutely. Portugal जितनी अच्छी है but they always underachieve. Yeah, that's what मैंने बोला है ना, Fernando Santos, he is the problem for me. मतलब again he's as a manager generally he is great, लेकिन for Portugal he is not able to use. जैसे some people criticize Jose Mourinho, I know I love Jose Mourinho, you love as well, pretty sure, I'm sure Shrey, लेकिन वही है यार, कोई लोग बोलते हैं कि he doesn't use attacking talent better as good as what it could be versus like a high work rate kind of a player. So he's that kind of a coach for me. ओके, यहाँ पर और भी बहुत कमेंट्स में एज यूजुअल स्लो एज यूजुअल बिकॉज आई एम वाचिंग द मैच, आई एम काइंड ऑफ लुकिंग एट ट्रांसफर न्यूज और आपके चैट्स ले रहा हूँ. यस, बाय द वे, हम ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में, तो अगर बाय चांस आपको करना है प्रायोरिटाइज चैट, सो यू कैन ऑलवेज डू इट विद अ सर्टेन वे ऑफ सुपर चैट, लेकिन अगर आप अफोर्ड करो. और हाँ, मैंने एक पोल डाला था अबाउट मेंबरशिप यार, प्लीज डू टेक दैट पोल एज वेल इन माय कम्युनिटी पेज. आउट ऑफ टॉपिक, बट भाई योर फेवरेट ईपीएल promo, mine ESPN 2011-12 animated story 1 and 2012-13 Sky Sports written in the stars. Miss those kind of Timo Werner with this typical nice tackle भाई by Portugal, nice one, almost pain through हुई थी. लेकिन यार मैं तो बोलता हूँ अगेन, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मतलब mid 2000s nothing like it यार. मैं आप देखो, मतलब I don't know if you follow me on Instagram, when I put stories of EPL kind of match weeks ना, काफी बार मैं बैकग्राउंड म्यूजिक में डालता हूँ वो 2004-5, 2005-6 वाला, music. I love that anyway. Unai helps to build from the back. De Gea and Kepa can't do that as well. Kepa can do Advait. Kepa can do. Lekin Kepa obviously is not as good as a shot stopper, as De Gea also. So Kepa I can understand certainly. Lekin again, there are a lot of issues with Kepa on long shots. हम जानते हैं वो problem है. ओके, थैंक यू. बहुत ही स्लो. चलो 2-1 पोर्चुगल, बस देख लेना माइक ड्रॉप. 3-0 स्पेन. बिग अप अंकित, बिग अप टू यू एज वेल. एब्सोल्युटली. एंड yes, whom are you supporting? Everyone, like predictions is one thing, but whom are you actually supporting tonight? My prediction always goes down the drain, but 2-0. Okay. Adway Naik, who said about Gakpo? Who said? That's the biggest question. Ronaldo and Silva, Ferran Torres. Yeah, okay. C News, Gakpo offered to Chelsea and Arsenal. So he's been offered, correct? लेकिन क्या Chelsea ने interest दिखाया? That is the bigger question, right? Are you referring to your opinion? Absolutely. I'm referring to that. Absolutely. Malab, maybe I worded it wrong. I said that I'm not a Messi stan. I don't know. People who kind of follow me from a long time know what I'm saying, right? As in, I would be the last one to basically, I'd be a fool to criticize Lionel Messi. I'd be a fool. Okay? The guy, malab, there was a reason why I liked Robin in that era and not Messi comparatively, because again, I don't like anyone dominating football, and those are like totally, मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते हो. मेसी एंड रोनाल्डो आर टोटली डिफरेंट लेवल, एटलीस्ट इन मॉडर्न डे फुटबॉल. ठीक है, और मैराडोना, मेसी, रोनाल्डो, पेले, क्राइफ, दीज आर लाइक डिफरेंट लेवल. जिडान में भी इवन मैं तो बोलता हूँ, रोनाल्डिनियो, दोज आर लाइक 7-8 जो गोट्स है प्रॉपर, तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो. उसके अलावा मैं बोलता हूँ भाई रॉबिन ऑब्वियसली, और वही नहीं है, मतलब अगर सब लोग ही दुनिया में है ना, सब मेसी स्टैंड्स बन जाए, तो बाकी दुनिया क्या है? Actually, that is what I meant. That doesn't disrespect Messi, man. What he's done is like absolutely breathtaking, and what he did in the match, like if you actually followed me in the watch along. But yes, there were people who unsubscribed, there were people who DM me, there were people who messaged, and some question like Matata United. Big up to Matata United, because he questioned and answered, and probably they understood. So that's okay. But yeah, there are people who don't, right? Absolutely. Like live नहीं किया फिनलिस्मा, हमने किया था भाई, हमने किया था. आप नहीं थे. आप यार गिरी भाई, मतलब ये प्रूफ है कि आप अब हमारे दूसरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं हो. ठीक है, तो याद करिए, मैं हमारे 2 चैनल्स है, दीज आर 2 डिफरेंट चैनल्स, दोनों में ही फुटबॉल का कंटेंट आता है. दूसरे चैनल में और स्पोर्ट्स का भी आएगा, स्पेशली क्रिकेट, राइट? लेकिन डेफिनेटली प्राइमरी फुटबॉल ही है भाई. आप देखो यहाँ पर, प्लीज सब्सक्राइब तो नीचे है आ रहा है, और नीचे टैग भी है पहले लाइन डिस्क्रिप्शन के. यहाँ पर अच्छा विंग प्ले स्पेन का. लेकिन Almighty Blues FC is what you're watching. Almighty Sports Plus, बहुत ही सिंपल सर्च है YouTube में, और टैग भी नीचे क्लिक करिए. अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, प्लीज. इट सर्टनली हेल्प्स. हमने वहां किया था प्रॉपर. Pep will coach Juve one day. Oh, interesting. Let's see. भाई Serie A अगर आ जाते हैं ना, और भी पैसे apart from Milan and Inter again getting power, Juventus again improving,
तो मुझे लगता है कि वापस कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तब जाएगा. He won't go to a non-competitive league. That's what I feel. वाओ, यस यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैंने एक्चुअली उनको कंग्रेचुलेट करना भूल गया, लेकिन एब्सोल्युटली भाई, मतलब ब्रिलियंट मैन. जीशान भाई इज लाइक next level. And not only that, you know it, like Mo Bhai, Drog Baba, everyone, you know, as in all the Indian football community, they are great. But of course, the idea is, even hopefully we get there and you guys help us get there. Absolutely, you know, nothing against anyone, just proper disclaimer. हाँ, देना पड़ रहा है भाई, इतने judgmental हो गए लोग. लेकिन अद्वै नायक, नेम रिपोर्टर, gave the news. Absolutely, thank you for this as well. This means a lot. Just I know, again, not necessarily that everyone gives me that, लेकिन जो भी देता है, big up to them. Big up your MShare. Like, you know, you have been supporting the channel for a very long time as well. Lekin this is a gesture, more than any way I know, but absolutely, you know, this means a lot. And yes, you know, it'll be interesting to know, like, internationally, in the, I'm guessing you are supporting Spain, correct me if I'm wrong. Lekin wo mera guess hai, let's see. Adway, when Ankit said he's not a big fan of Messi because Messi and Ronaldo are not on a level ground with other players, but I'm sure Ankit is a big fan of Messi. Absolutely. वही मैं बोल रहा हूँ. Like, I'm a fool if I don't like them. I'm a fool. You know what I meant is, I'm not a stan. एक होता है ना भक्त, मैं भक्त नहीं हूँ मेसी और रोनाल्डो का, और बहुत लोग हैं. Big up to them, big up to them. पता नहीं यार, मैं थोड़ा वियर्ड हूँ. आई जस्ट लाइक बीइंग डिफरेंट, और मैं पहले से ही हूँ, बचपन से ही हूँ. लाइक, आई जनरली, okay, let me put it that way. I don't say others are wrong, but I generally don't like follow the crowd. I don't know if you follow the channel enough to kind of guess that. I kind of mix content, I kind of mix languages. वो भी मेरा है थोड़ा सा, मतलब मेरा एक अलग सा ऑलवेज रहा है. मे बी सबकॉन्शियसली मोटो कि यार मुझे तो कुछ थोड़ा सा अलग करना है. मे बी आप बोलो कि यार वो जबरदस्ती कर रहा है टू शो ऑफ, आप लोग की यू नो राय होनी चाहिए, लेकिन वो दैट्स हाउ आई एम. आई कांट चेंज माई सेल्फ आफ्टर व्हाट 30 प्लस ईयर्स. दैट्स अ फैक्ट, राइट? तो मतलब इतना है बस. लेकिन अगेन, रेस्पेक्ट टू एवरी फुटबॉलर, स्पेशली द गोट्स यार, हाउ कैन आई नॉट. लेकिन हाँ, आई एक्चुअली अप्रिशिएटेड इट इन द पोस्ट. अगर आप पूरा पोस्ट पढ़ो ढंग से, यार आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली यार बुलाएंगे तो जाएंगे यार, कोई नहीं. इन द फ्यूचर वी विल सर्टनली गो यार, कम ऑन. लाइक, सभी मतलब चार लपाट है अपने, सब भाई है यार, कम ऑन. टुडे कोचेस वांट गोलकीपर हु कैन प्ले फ्रॉम द बैक. दैट्स अ रियलिटी, दैट इज अ रियलिटी. लेकिन वो ओवरप्ले हुआ हो, आई थिंक इट्स बीन ओवरप्ले ना, लॉट ऑफ टाइम्स इट्स बीन ओवरप्ले, आई फील. और यहाँ पर यार वही है, मतलब अगेन आई वांट टू आल्सो जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ ऑन द सेम पॉइंट दैट आई वाज सेइंग ना, कि यार जो डोमिनेट करते हैं ना फुटबॉल, मतलब मैं इन द पास्ट हैव आल्सो सेड, आई नो यहाँ पर भी थोड़ा हेट लूंगा मैं. इन द पास्ट हैव सेड दैट okay, to watch a game of football of maybe my rival team, that is Spurs, मुझे as a neutral spectator I would rather prefer than watching Man City. Will you take it wrongly? उसका मतलब क्या हुआ? मैन सिटी इतना डोमिनेट करती गेम को ना कि ना वन साइडेड लगता है गेम को, और आई ऑलवेज वांट अ कॉन्टेस्ट. टॉटनहम इतनी गलतियां करती है कि बेसिकली ना वो इंटरेस्टिंग बना लेती है गेम को. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग एज अ न्यूट्रल. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. So that's what I meant again with Messi and Ronaldo versus the rest of the world, you know. मतलब that's what I was saying. लेकिन again, आप स्पेन का भी देखो ना, टिकी टाका फुटबॉल भी चलता है. मतलब इतने सारे बढ़िया प्लेयर्स है. ऑन स्किल दे आर अमंग द बेस्ट, यू नो. इन द लास्ट 15 years they have been the best, ठीक है. लेकिन would I prefer watching Netherlands versus Spain? I'll prefer Netherlands because I'm a Netherlands supporter. और मुझे अच्छा लगता है Netherlands, the way their football ideas are. मतलब it doesn't mean कि मैं expect हूँ कि बाकी लोग भी वैसे हो. You know what I mean? तो the people who unsubscribed and the people जो DM किए मुझे और किए, I understand you're a Messi stan. मतलब can I force everyone to become a Robin stan? नहीं ना, मतलब I cannot force. But again, मुझे ये भी पता है कि सब लोग बोलेंगे Robin was a great player, but Messi was better, and I agree with that. You know, but I'm not saying that, right? I'm not kind of comparing it. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यार मुझे एक certain kind of football ज़्यादा पसंद है. It doesn't mean that मुझे दूसरा kind of football नहीं पसंद है. You know, I really respect every kind of football. It's just that what I prefer watching as a spectator, which I have my choice, like you have your choice, right? वही है बस. Why not Nuno Mendes? यार मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की बात आ जाती है बस. The fact कि यार इस ग्रुप में, by the way, मैंने ग्रुप दिखाया था शायद, हाँ मैंने ग्रुप दिखाया था. तो obviously they have Spain, Portugal, Switzerland और Czech Republic, ठीक है. तो Spain versus Portugal will be the most important game. और again, it's been a long season. मेरे ख्याल से गुरेरो, जहां पर बुंडेसलीगा का सवाल है, इतना मतलब रिग्रेस सीजन नहीं रहा था वर्सेस द PSG. So that's why I'm assuming कि यार गुरेरो is playing. Besides Rice, who do you want to have DM? Bissouma can be a good shout. Yes, Bissouma is certainly a good shout. I think Sangare is not a bad shout. लेकिन वही है, Sangare as a starter, I think it's too much of a risk. I know it's
probably wrong thinking as a Chelsea fan. Lekin I think maybe we might have to go that route and along with Billy Gilmore. Lekin apart from that, bhai DM pure DM वही है, मतलब इट इज वेरी रेयर कमोडिटी ना. तो और कौन है यार भाई, लिंक भी नहीं हुआ है. प्रॉब्लम ये कि not many players have got linked. I know NDD is a shout. NDD is definitely a shout. NDD the fact कि उनका जो सीजन था ना, नॉर्मल सीजन जितना बड़ा अच्छा सीजन नहीं था, तो that's why he might be available just about. I'm just saying it out there. Okay, can't support Spain ever since they beat Germany 6-0. But as a Goan, I can't support Portugal either. But big fan of Mr. Su. Now what to do? Alright. आप एक काम करो, मेरे जैसे रहे हो, मैं ना दोनों टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा आज, ठीक है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन भाई. मतलब देयर माइट बी मैचेस वेयर यू जस्ट एंजॉय एज अ न्यूट्रल. एंजॉय करिए बस, मतलब होप फॉर अ 3-all ड्रॉ, पुट इट दैट वे. लेकिन यहाँ पर और देखते हैं भाई, और थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं. He has transformed teams in all big leagues and Italy remains for Pep to conquer. Good point. Absolutely good point. No way I spend more than what Laporta will spend this summer. लाइक कर दो गाइस. यस मैं बोला ही भूल गया आज तो. लाइक कर दो यार, सब लोग हेल्प करते हैं. और यार अगेन मैं देखता हूँ यार, कोई लोग ने रीट्वीट किया तो मस्त रहेगा. सो दैट अगेन रीट्वीट द ट्वीट व्हिच हैज द लिंक एंड नॉट व्हिच हैज माय वीडियो, so that people are knowing where to come. नहीं किया यार लोगों ने, कोई नहीं, मैं अभी कर देता हूँ वापस से retweet so that it comes on top of my page. By the way, it's Almighty Blues FC on Twitter. अगर लोग देख रहे, I don't know, it's very simple to remember and follow. But yes, let me retweet again. I've just done that, people. So hopefully you guys can help me reach more people and we'll have more people to discuss with. Hello to NS Sports TV Nipun. How are you, brother? And what's your prediction? What's your basically, as in favorite for the Nations League altogether? And everyone, Nations League कौन जीतेगा भाई? मतलब last time obviously with France winning, उसके पहले बार Portugal winning, इस बार कौन जीतेगा Nations League? शुरू हो गया है Nations League A. तो let me know who is your favorite to win the Nations League altogether next year. You are a weird bhakt of Chelsea. I can guarantee that. Well, absolutely, man. I'm literally weird. That's what people used to call me, but I don't care about that, to be very honest about that. But I love you, Lumanu. Robin is the world class Joe. Yeah, absolutely, bhai. That was. But like, again, I kind of loved Robin when he's on Chelsea, when he used to play as a left winger, and that's a fact. And Robin, Duff, and Joe Cole, man. Wow. Ankit bhai, sorry for you. बड़ा दुख होगा अपना prime defender lose करके सब तो. Yeah, we'll talk about that. Rudiger, of course. Gusha, no problem यार, होता है. It's part of life. part of football. भाई साहब यहाँ पर काउंटर अटैक करते हुए पोर्चुगल विद अ नाइस, आई थिंक, रिलीज किया डियोगो कोस्टा ने. सिल्वा विद अ ब्रिलियंट क्रॉस. रफाएल लियाओ. देखते हैं आप कितना स्ट्रेंथ यूज करते हैं. भाई साहब पीछे क्यों आ रहे हो आप? अरे यार आपके पास स्ट्रेंथ है, आप यूज करिए ना आराम से. भाई ऐसे धक धक हो रहा है, पता नहीं. अरे यार कोई नहीं यार भाई, मतलब अभी तो शुरू है. ट्रांसफर विंडो जस्ट स्टार्टेड. इट इज लिटरली स्टार्टेड 48 आवर्स अगो. ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो बहुत स्टोरीज आने बाकी है. यस बट ऑलवेज ओके. काम खींच के रखो, कान खींच के रखो. भाई ये क्या हुआ? पोर्चुगल विद अ चांस. पोर्चुगल विद अ प्रॉपर चांस. यार एस्पिलिक्वेटा भाई, राफेल लियाओ, छक्का मार जाओ ऊपर, गोल पोस्ट, अच्छा बार के ऊपर. By the way, we have 69 votes in the poll. Okay, that is also less. I hope we have 169 votes and 69 likes in no time. Okay, interesting. One player you for sure want for Chelsea this season. Okay, so let's talk about Chelsea and the transfers. अभी लग रहा है आप लोग को and Hazard तो रहने वाला है भाई Madrid. Absolutely, भाई. Thank you Harshvardhan, means a lot that you did that. लेकिन हाँ, कहाँ से शुरू करें? चलो, ये big news, of course, people. Dembele, ठीक है, तो Dembele to Chelsea, as per reports Dembele ने अग्री कर दिया है. yes, potential breaking news कल आने वाली है. hopefully, again as Chelsea fans we always just say hopeful. कुंडे का हम 6 महीनों से बोल रहे हैं, लेकिन as per lot of reports, I think एक Twitter account है जिनका basically we have like 100,000 followers or something, and that Twitter account has said that. Again, I'm not sure if that person is a journalist, but I've seen that and a couple other journalists also जिनका है blue tick mark, उन्होंने भी बोला है. तो I'm assuming
एंड ऑफ कोर्स मेरे सोर्सेज ने भी बोला है कि डेम्बेले is very close, it's imminent, but again the fact that it's not happened technically हुआ नहीं है अभी तक, इसलिए it's not announced as a thing, but it should happen this week is what we're hoping. Unless again Barca come back with a better offer, or unless basically PSG come with a better offer of salary. Like, Dembele is happened. So people, what do you think about Dembele to Chelsea? How do you rate that signing altogether? Like, मैं तो बोलता हूँ भाई Dembele to Chelsea will be really good. हाँ मतलब maybe it means that Ziyech at the end हो जाए. I really feel that. मतलब मुझे नहीं लगता we'll have दो kind of, I know very different players, but at the same time you know what I mean, right? Same position में खेलते हैं. तो इसीलिए basically I'm saying that Ziyech will be knowing that Dembele आने वाले starters जैसा. Ziyech का problem वही था. वो एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्ट करने के लिए चेल्सी में, तो आई थिंक ही इज प्रोबब्ली गोइंग, एंड Ziyech is still at that, I think almost at his peak, you can say. इतना दूर नहीं है, इसलिए I think we will still be able to get some money from Ziyech. Although I don't want that. I love Ziyech, having been a Dutch supporter. He has Dutch citizenship as well for people out there. और काफी किया था उन्होंने, लेकिन unfortunately नहीं. So I think Dembele comes in, Ziyech goes out is what most likely लग रहा है. Again, आप comment करिए. I will rate that as mighty. This one is happening. मतलब again, I might be wrong. मैंने Perisic के लिए भी बोला था, people will say, but again, things change in transfer market. इसलिए मैं almighty नहीं बोल रहा हूँ, मैं mighty बोल रहा हूँ. Okay, we don't need this Hazard now though. Absolutely, I agree. Start membership. Okay, I will. I'm just waiting for a few more votes, and then hopefully the idea was anyway that I'll reach closer to 4K on this channel, and hopefully the other channel gets monetized. Then हम start करेंगे. That was anyway the idea and this month for sure हम करेंगे. Spain don't have really good attackers like earlier, Morata, Torres and Sarabia and Redwood. Exactly. और मैं स्क्वाड भी दिखाऊंगा क्विकली. यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ ऑप्शंस क्या है. स्पेन के पास ऑप्शंस क्या थे, मतलब अगेन आप देखो ना पिच पर भी, मतलब टिकी टाका मस्त खेलते, दे हैव गुड पासर्स स्टिल अभी भी. हाँ, डिफेंसिवली थोड़े वीक है, बिकॉज आई डोंट सी द बैकअप डिफेंडर्स आर एज गुड. Aspilicueta also is not having the legs. Carvajal would be a better option. I'm honestly saying, अगर वो फिट है तो Carvajal should have been playing, but again maybe वो चैंपियंस लीग फाइनल खेले थे, बहुत अच्छा खेले थे, और गिविंग हिम अ रेस्ट, फेयर इनफ, राइट. लेकिन यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ स्पेन की जो टीम अभी सिलेक्ट हुई है, राइट. अरे क्या शेयर कर दिया. एक सेकंड मैं, चलो ये टीम शेयर हुई है, सिलेक्ट हुई है, राइट. तो जैसे मैंने बोला था, गोलकीपर में बहुत ही सरप्राइजिंग ब्रेंटफोर्ड के गोलकीपर है, जो जिन्होंने एक बार ही खेला, डेविड राया. आई डोंट नो, आप लोग बोलिए, ऐसा तो कुछ यार झंडे नहीं गाड़े डेविड राया. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग. रॉबर्ट सैंचेज आई एग्री, उनाई सिमोन आई एग्री, लेकिन डेविड राया की जगह डेविड डेया होने चाहिए थे एटलीस्ट इन द स्क्वाड. मेरा ये ओपिनियन था. डिफेंडर्स में जैसे मैंने बोला, एस्पिलिक्वेटा, कार्वाहाल राइट बैक्स, लेफ्ट बैक्स और मार्कस अलोंसो, और ऑफ कोर्स जॉर्डी अल्बा. ठीक है, वो वाइस कैप्टन है तो वो खेल रहे हैं. Lorente, interesting. Leeds United say he's been picked to play today. Martinez is decent for Bilbao, pretty decent defender. Pau Torres picks himself. I think Eric Garcia. So I think आप बोल सकते हो कि यार PK, going out of Spain is a huge issue. And what about the PK news, man? बहुत ही saddening, man. I can't believe it almost. But yes, आप देखिए upfront की question थी ना, तो यहाँ पर देखो Sarabia, Ansu Fati, Ferran Torres, Marco Asensio और Morata, और कौन options है. I think in the previous teams आप देखो, they had obviously a lot of other options. Yeremy Pino was one. I don't think he's been fit. Villarreal के of late. Rodrigo of Leeds, मतलब again he's not finished very well. I think Oyarzabal is a great shout. ये होने चाहिए मेरे ख्याल से. Real Sociedad के decent player है. Brian Gill, Adama Traore, not great finishers, अभी not ready. I think Gerard Moreno also should be there. I think Moreno or Oyarzabal should be there World Cup में. मतलब आप बोलिए, whom would you like to see? I am seeing possibly Marco Asensio not being there. Because again, unless वो change करे, maybe something else. But I'm seeing Asensio not being there in the future for the World Cup, that is. And of course, instead of Raul Di Tomas, I'm guessing they'll have I think Moreno. Moreno of Villarreal is brilliant, and I think Yeremy Pino also has a shout, I would say. लेकिन midfield I think kind of picks it themselves. I don't think midfield में ज़्यादा है. Only thing is, the biggest point is Busquets, the legend, is playing as a starter. What do you think about that? Isn't it controversial that Rodri has such a great season and he's not able to start? मतलब I know Busquets also had एकदम great season for Barca, indispensable for Barca. लेकिन honestly बोलिए आप, Rodri, didn't he have a better season for City? मतलब I'm just putting it out there. I'm just kind of asking question before you people judge me. Anyone judges me. Okay, a new hospital to be built in Cobham to celebrate signing of Chelsea.
The way and his sense of humor, man. Seriously, Dembele, Hazard अगर आ जाए तो देखते हैं. हैरी मैग्वायर नाम रोमानियली नहीं यार, रोमानियली नहीं यार. आप अगर इटालियन लीग से ला रही हो या स्पेशली एसी मिलान से ला रहे हो तो यार टोमोरी की लाओ. मतलब आई नो रोमानियली इज ऑन फ्री, इज अ डिफरेंट थिंग, बट कम ऑन, नॉट फेयर. हैरी मैग्वायर, you know, मतलब it's just a pun. Your sources other than Simon Phillips, Romano, and Onstein. I think ये तीनों है. Simon Johnson, he's not a bad one either. Nizar Cancela, Matt Law for Chelsea, definitely. मैं तो बोलता हूँ I actually follow Nizar Cancela और Matt Law और भी ज़्यादा. अरे भाई रफाएल लियो बढ़िया भाई, क्या प्ले करता है ये. Rafael Leo, man, the most improved player in Europe. Simple, period. What the way he beat Aspilicueta, भाई नहीं चल रहा आपका गेम. मैं बोल रहा हूँ भाई, कैप्टन फैंटास्टिक, आपको हो गया टाइम एज राइट बैक. भाई गावी विद अ ब्रिलियंट बॉल, या गोले वाला स्पेन का हो गया. और मैन, व्हाट अ काउंटर अटैकिंग गोल, मैन, व्हाट अ गोल. मोराटा, दी Alvaro Morata scores. भाई साहब, Alvaro Morata actually scores the goal. What a chance and pathetic defending by Portugal. It was Rafael Leao का chance. Rafael Leao on the left wing brilliantly beat Aspilicueta और पता नहीं क्या हुआ भाई. एक आया गावी ने brilliant ball खेला राइट विंग पे और आया भाई मोराटा को brilliant pass, man. स्पेन यार भाई साहब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लुइस एनरिके had it time and time again. I say that he's much better than your Santos. एंड यहाँ पर मैंने खुद क्रिटिसाइज किया था राइट विंग का स्पेन का, और आई थिंक आई थिंक इट वाज किसने था, आई थिंक सराबिया ने किया क्या. हाँ, सराबिया ने पास किया फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. हाँ, सराबिया ने पास किया एंड मोराटा विद एन इजी फिनिश. ओ मैन भाई साहब, व्हाट अ गोल मैन. मतलब पता नहीं कितने लोग को याद होगा. आप लोग गूगल करिए, यूट्यूब में देखिए चाहे. बेसिकली रियल मैड्रिड का एक गोल था जो रोनाल्डो भाई साहब ने किया था, आई थिंक विद प्राइम ओजिल, ठीक है, विद अलोंसो. आई थिंक अलोंसो, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दी जावी अलोंसो देयर. तो दैट टीम के साथ अंडर मोरिनियो उन्होंने एक काउंटर अटैक पे गोल किया था. व्हाट अ ब्रिलियंट गोल. आई थिंक इट्स, मैं तो इतना बोलता हूं, इट्स एज गुड एज दैट. वाओ वाओ, दैट्स सुपर्ब काउंटर अटैक मैन, सुपर्ब. स्पेन भाई, हम लोग बोल रहे फिनिश नहीं कर सकते भाई साहब. They are really good. They are really good, man, if they can do this, man. Anyway, let's take a few comments from here. Yep, Nostalgia FC, bring Liao to Chelsea. What a player. Absolutely, भाई. लियाओ मैं बोल रहा हूँ. अच्छा, लियाओ भी ना, वही मैं हनुमान जी का जो दिया था ना एग्जाम्पल उस दिन, दैट basically Sri Hanuman, you know, he needed to be reminded कि basically है ना, you have power, you need to just use it. I think he's like Reece James, Rafael Leao भी है. He really is that good. He really is. मतलब ऐसे रोनाल्डिन्हो आपको ऐसे ही रेकमेंड नहीं करेंगे. तो आई एम प्रीटी श्योर, यू नो, राफेल लियाओ इज द नेक्स्ट बिग थिंग, मैन. बुस्केट्स सीडीएम गोट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑल टाइम मैं बोलूं तो ही इज अ लेजेंड, अ गोट. लेकिन ऑन फॉर्म में बोल रहा था, ऑन फॉर्म आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक रॉड्री काइंड ऑफ पिक्स himself more than Busquets, but again he has done it, you know, in Spain, so I have to give it to Busquets as well. लेकिन हाँ, और प्लस कैप्टन है भाई स्पेन के, तो यार इससे पहले पीपल गेट ऑफेंडेड. लेकिन हाँ, मैं वापस से भाई गावी मैन, व्हाट विजन ही हैज. अरे विवान, थैंक यू मैन, थैंक यू, एब्सोल्युटली मींस अ लॉट. शुड आस्पी नॉट रिटायर एट हिज एज. यार ऑनेस्टली मैं बोलूंगा, उसका नेशनल टीम ड्यूटी स्टार्टेड वेरी लेट. He was really unlucky for many years, but now is not the time to play right back in a back four. And again, links with Barca fans, I'm sorry, वो right back in the back four starter नहीं होने वाले, मैं clearly बोलता हूँ. अरे I don't know man, मतलब that means a lot. Like काफी अच्छे मैं खुद follow करता हूँ. I'm just learning from the others, but I'm just here to express my views, to be very honest about it. मतलब वही है, मैं सोचा इतने साल देखे कभी यार. And of course, as we grow older ना, आप लोग सब समझोगे, as we grow older, आपकी जो फुटबॉलिंग जनता वाली फ्रेंड्स थी ना, वो ऑटोमेटिकली दे हैव देयर ओन, यू नो, फॉर्मेलिटीज एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, दे गेट फर्दर. तो अगेन आई एम हैविंग अ न्यू फ्रेंड सर्कल व्हिच इज योर मैन, ट्रस्ट मी ऑन दैट. एंड आई एम हैविंग अ new football friend circle, and you know that's something that I was looking for. I got that probably. Lucho trusts Busi. Yeah, absolutely. Busi is the captain, so it's clear that he trusts Busi. Absolutely. और again, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि बुरा है. Just what I'm trying to say is that Rodri has a goal in him. Let's be honest about it. Rodri has a goal in him. तो वो थोड़ा सा एक added element है, maybe Spain का thing. लेकिन ये गोल देखने के बाद भाई, I would say नहीं. I think Busquets suits well. Busquets sits more. I think it suits perfectly for Spain. और Gavi, Pedri भाई, मतलब what a midfield, man. What a midfield. Spain का midfield has always been one of the best. By Bruno Fernandes is a bad tackler on Gavi, by the way.
चेक इट आउट मैन, ब्रूनो फर्नांडिस टैकलिंग ऑन गावी, मतलब गावी मैन, ही इज इतना यंग और ये भाई साहब गोल होने वाला है, हक दिया स्पेन ने। ओ माय गॉड, मोराटा भाई साहब, नहीं मोराटा नहीं, इस बार कौन थे, सराबिया थे क्या? अरे मिस कर दिया यार, मिस कर दिया एक और होता यार। गावी इज लाइक वाओ मैन, एंड व्हाट वाज दानिलो परेरा डूइंग, क्या कर रहे थे दानिलो परेरा भाई? आप वर्जिल वैन डाइक ऑफ चैंपियंस लीग फाइनल बन गए थे फॉर एक सेकंड, एंड यू ऑल रिमेंबर मैंने शो किया था व्हाट मोमेंट, बिफोर यू गाइस जज मी अगेन। यार आज बहुत ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ हर एक लाइन में, पता नहीं क्या हो गया आफ्टर सीइंग सो मेनी डीएम्स, नहीं होना चाहिए ऐसे, बट एनीवे। वुड यू प्रेफर पाउ टोरेस और कुंडे एट चेल्सी? 100% पाउ टोरेस, कुंडे इज नॉट वर्थ 70 मिलियन, ठीक है? यहाँ पर कुंडे की बात कर रहे थे, मैंने नोट किया, वही करने वाला था नेक्स्ट। अच्छा, तो एज पर रिपोर्ट्स डेम्बेले अकेले नहीं है 48 आवर्स के अंदर, एज पर रिपोर्ट्स अगेन, एज पर रिपोर्ट्स कुंडे चेल्सी आर कॉन्फिडेंट कि 60 मिलियन यूरोस डन डील, यू हर्ड इट हियर, 60 मिलियन यूरोस कुंडे इज डन, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट लेटेस्ट रिपोर्ट से, और मैं बोल रहा हूँ ये, आई वुड से दिस इज ऑलमाइटी ऑलमोस्ट, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ ऑलमाइटी, कुंडे टू चेल्सी ऑलमाइटी 60 मिलियन यूरो, लेटेस्ट न्यूज। एंड डेम्बेले टू चेल्सी ऑन अ फ्री विद सैलरी वेजेस नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि वो अभी तक वही खुद अग्री किया है, लेकिन अभी तक उसको जवाब नहीं मिला होगा बारसा से, अगर वो काउंटर ऑफर कर रहे हैं या पीएसजी से, तो हो सकता है वो थोड़ा सा अभी ऑफर्स को बेसिकली एज इन शॉप करे, आई डोंट नो, मे बी, तो उसका थोड़ा सा अभी है, इसलिए मैंने बोला माइटी, लेकिन दोनों ही डेम्बेले और कुंडे आने वाले हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ द फैक्ट दैट विल बी स्पेंडिंग 60 मिलियन यूरोस ऑन कुंडे अलोन, I cannot see us getting Pau Torres. I cannot see. We'll probably lose it to Man United. After De Jong, they will probably talk about Pau Torres, I feel. और लग रहा है टिम्बर नहीं जाने वाले यूनाइटेड, मतलब आज देयर वर खबर की दैट माइट बी पुट ऑफ, लेकिन डियोंग टू मैन यूनाइटेड 85 मिलियन यूरोस बात हो रही है, 85 मिलियन यूरोस थोड़ा कम हो गया है, तो लगता है पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक मैन यूनाइटेड फैंस? एनीवे, ये नेशन लीग कब तक चलेगा? तो ये है अभी 4 मैच डेज होने वाले, 4 मैच डेज कवर्ड ओवर 2 वीक्स, तो 14 जून तक होगा सुशांत, और बाद में आई थिंक 2 और मैच डेज सितंबर में होंगे, और फिर बेसिकली यू विल हैव योर द नॉकआउट्स व्हिच विल बी बेसिकली नेक्स्ट ईयर। तो टोटली we'll have 6 match days, every group in league A basically has 4 teams, ठीक है? तो वो 6 मैचेस खेलेंगे, 1 home, 1 away. We have Match Street Football in the house. Thank you for joining. Well, if it isn't the Almighty Blues, glad to be still up. Hope you're good man. Absolutely great. And do like the stream. And by chance, मैंने आज notice किया कुछ लोग ने Almighty Sports Plus का watch along miss किया recently. So let's actually subscribe to that channel as well. Road to 3K. It's very surprising. We have finished. May have not reached 3K. But anyway, whatever you got, I need to be happy and thank you as well. But hopefully we get further in that channel, because honestly मैं बोलूँ तो Almighty Sports Plus will become a brand going forward. That's what हम plan कर रहे हैं, तो that's why I really want us to get a lot of support in that channel as well, क्योंकि I really want to grow that channel and do a lot more content and of course grow the team. If Dembele remains injury free, he could be very lethal for Chelsea, but Lukaku needs to go ASAP. Again यार मैं रिपोर्ट्स के साथ ही जा सकता हूँ, लुका कुनाल लाइक yes, as per reports he really wants to go to Inter Milan. Whether he wants to go now or maybe finish his career there, that only he can tell. लेकिन हाँ, as per reports he wants to go. अगर जाना चाह रहा है और Tuchel भी doesn't see him as a fit, or we are able to get Lewandowski, I am okay with that. लेकिन if you're not able to get a proven striker, absolutely no. I'm not taking a loss, and I just want a proven striker at Chelsea. कुंडे हमारे डिफेंस पे कोंडी मार देगा, प्लानिंग वेकेशन एंड देयर विल बी नो शॉट्स ऑन गोल। अदवे मैन, सीरियसली मैंने अदवे नहीं होते तो क्या होता है यार स्ट्रीम का। हेलो बॉयज, एब्सोल्युटली थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हेलो टू यू एज वेल। आई होप लकाका गेट्स मोर प्ले टाइम अंडर टीटी। ही हैज शोन इंस्टेंसेस। बाय द वे, राफेल गुरेरो आई थिंक टेकिंग, अरे फार पोस्ट पे अच्छा चांस था भाई। राफेल के पास अभी भी बॉल है, रखो बॉल, चलो नाइस। ऑफसाइड है क्या? ऑफसाइड लगा मुझे, नहीं दिया रहा रेफरी ने। इंटरेस्टिंग, चलो कोई नहीं। मतलब वही है, मतलब he has to get more play time, और वही he needs to मतलब sometimes क्या होता है ना, you need to gel well with the team. I think somehow वो दिख रहा था यार, वो after the Sky Italia वाले interview he wasn't gelling well. हाँ, towards the end again he was gelling well. तो I think spending more time heals everything, like they say. But does it? I don't know. Time will tell.
We are happy with Maguire and McFred. Interesting. Chelsea needs striker who's good with build-up play. Kai drops sometimes for build-up play, but Chelsea don't get space. अच्छा, so that there is an argument, Gaurav. 100% मैं agree करता हूँ. मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा ना, we need two types of play. ठीक है, I don't think हमें one trick pony जैसे होना चाहिए. Okay, we are not a Man City. Let's be honest about it. Man City जितना हमारे पास क्वालिटी नहीं है. That's what I meant. अरे भाई, पोर्चुगल का होने वाला गोल नहीं मिस हो गया. उनाई सिमोन वाज नोवेयर. इतने सामने क्यों आए भाई? आंड्रे सिल्वा ने आई थिंक जल्दी ट्रिगर दबा दिया. आई थिंक ही शुड हैव वेटेड फॉर अनदर सेकंड ही हैड इन हिम. अरे भाई, सेंटर हाफ आपका चैलेंज नहीं किए थे यार. यू प्रोबेबली हैड मोर टाइम. आंड्रे सिल्वा, चलो मैं तो यार इंटरेस्टिंग हो जाता मैच अगर होना हो जाता बस उसके लिए. लेकिन ना, जस्ट कमिंग टू दिस ना, तो काई वी हैव ऑलरेडी. ठीक है, वी हैव ब्रोहा who's probably more direct. ठीक है, or we need someone who can hold up very well or who can basically run behind spaces, a bit of both. वो लुकाकू है on paper. तो basically we have three different kind of striker. So be it. हमें flexibility लानी चाहिए. It's about them in their mind. They need to be clear that we are Chelsea Football Club. We need to win anyhow. We need to have plan B and plan C. और मेरे ख्याल से it's not bad to have him. That's my opinion again, right? लकाका तो लोन पे जा रहा है अंकित भाई. 70 हाँ, मतलब लाइकली वही लग रहा है जैसे मैंने बोला था. इट इज बेसिकली क्लोज टू माइटी. लेकिन द फैक्ट इज मैं तभी शॉक्ड टू कि इंटर मिलान टेकिंग हिम बैक. आई एम रियली शॉक्ड. हैविंग सेड दैट, वही मैं बोला, आई नीड बेसिकली रिप्लेसमेंट हु इज प्रूवन. वी नीड अ प्रूवन रिप्लेसमेंट. नहीं तो व्हाई दैट. Can you give me the link for the game, please? I don't know, bro. Here in India, I'm watching on Sony 10.1. I have Sony 10.1 here, or on Sony Live is where I'm watching. I'm not sure if it's. I believe it's not accessible in Europe, unfortunately. But again, being a Nippon and NS Sports TV, Ankit bhai, being a Chelsea fan, what are the lowest and highest expectations from Todd Boehly? Acha, lowest expectations क्या है? Like he makes as less changes as possible. ठीक है, he makes as less changes as possible. He backs the manager. Simply put, वो एक basic expectation है. और he is ambitious enough at the same time. यहाँ पर गंदा टैकल, भाई साहब, येलो कार्ड मिल गया भाई. येलो कार्ड स्पेन को. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, okay, Sarabia with a yellow card, with a bad tackle, and I think the player from Portugal who got tackled, कौन था भाई? मैं मिस कर दिया वो. अरे भाई, गंदा था. It was a bad late one. It was a pretty late one, man. It was not very interesting of Sarabia to do that. लेकिन Otavio, I think, badly injured. नहीं, he's back to his feet. And yeah, मतलब आदमिया, आपके क्वेश्चन पे आके, I think the highest expectation would be that basically he gets success to Chelsea the way Abramovich has got. लेकिन again, I won't expect that. अगर he is able to back the manager, अगर he is able to give basically in terms of money, I would expect him to at least share in 150 million इस समर में. 150 million आप दो, be it overall player sales हो, जो भी हो, 150 million totally we should be able to buy players worth. That's the minimum. लेकिन maybe 250 million मिल जाए तो nothing, like we can have a Lampard के अंदर जो था window. But do we really need that? I think हमें चाहिए defense में definitely 2 players. हमें attack में चाहिए 2 players और एक DM. Ideally 5 players is what will do our proper. और defense में एक quality full back भी आ जाए, backup तो मस्त रहेगा. Wing back rather. Leva Lukaku swap then. नेकी और पूछ टॉम क्रूज डबल चिन. ओ भाई साहब, डू यू थिंक मैड्रिड शुड गो फॉर गनाब्री और एनी अदर राइट विंगर? भाई चेल्सी के साथ भी हुआ है लिंक इन द लास्ट 24 आवर्स. लेकिन प्रोबेबली द फैक्ट, यार एक और येलो कार्ड भाई साहब इस बार मिला स्पेन के मोराटा को. जाओ मुटीनियो, गंदा हो गया मैच थोड़ा सा. इंटरेस्टिंग फॉर द न्यूट्रल. लेकिन certainly I feel that Gnabry is a brilliant player. और again, I think he has gone on record saying that जब आप contract talks जो pending है ना, उस पर basically wait करते हो, तो you're not just looking for money, but you're looking for एक player commitment होता है, एक belief होता है, trust होता है player पे, वो सब आप देख रहे हो. यहाँ पर यार रफाएल लिया एक मिस किए तो उसका चांस वापस दिखा रहे हैं. मतलब again, he's a brilliant player. He still has a higher ceiling by the way. लेकिन हाँ, मैड्रिड अगर मिस कर दिए obviously with एम्बापे,
शुड दे वेट फॉर एम्बापे नेक्स्ट सीजन? मैं तो बोलता हूँ यस। और भाई ये इतने टैकल्स क्यों हो रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन? बोलिए भाई, इतने सारे टैकल्स। बर्नार्डो सिल्वा विद अ बैड टैकल ऑन फरहान टोरेस दिस टाइम। इंटरेस्टिंग भाई, दोनों मैन सिटी प्लेयर्स थे 6 महीने पहले। एक तो अभी भी है, लेकिन हाँ, क्या वो छोड़ेंगे मैन सिटी बदल बर्नार्डो सिल्वा? इंटरेस्टिंग। आई डोंट वांट टू पिस ऑफ मैन सिटी फैंस, आज बहुत जज किया जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, डेफिनेटली भाई, आई थिंक दे नीड टू वेट। दैट्स माय ओपिनियन। मेरे ख्याल से एम्बापे 2 साल बाद आएगा। अभी बोल रहा हूँ, देख लेना, मैं आएगा, मैं इतना बोल रहा हूँ बस। वो डेफिनेटली छोड़ेगा पीएसजी, अब कहाँ जाएगा उसकी मर्जी, लेकिन छोड़ेगा पीएसजी 2 साल के बाद, अब देखना। लेकिन हाँ, मैड्रिड प्रॉब्ली शुड वेट। द रीजन इज नॉट जस्ट दैट, रीजन इज मेरे ख्याल से रोड्रिगो और वैल्वर्डे ने इनफ किया है भाई टू काइंड ऑफ एक मेरिट, एक स्टार्ट, एक ट्राई करो यार रोड्रिगो। मैं बोलता हूँ, लेकिन अगेन मैड्रिड बीइंग मैड्रिड, वो लोग साइन करेंगे एक बड़ा नेम, डेफिनेटली दैट कैन बी suiting up for second half. Okay, interesting. Ronaldo. Yeah, absolutely. Gnabry is definitely looking for a move. What do you think about Martinez to Chelsea? Bhai, I think you're talking about Lautaro Martinez. I would have preferred. अरे nice 1-2 यार by Ferran Torres by the way. एक और येलो कार्ड, एक और फ्री किक। Oh my God, this must be some kind of record यार, 3 मिनट में 5 फ्री किक्स दोनों साइड के लिए। लेकिन हाँ, just joking, the fact is for some reason stop start हो रहा है गेम, मतलब I have no idea। लेकिन यार देखो, लोटारो मार्टिनेज, I know he has some good, very good performances sometimes यार, he has a patch जब वो स्कोर नहीं करते, लेकिन most importantly I don't think he's a sort of striker जो चेल्सी पे है, आर्सेनल के साथ भी he was linked। I don't see Lautaro Martinez as a great fit because हम खेलते हैं with a single number 9, ठीक है। we already have like a Havertz who's a second striker, we already have। I don't think हमें एक और चाहिए। वर्नर अगर ऑफलोड करें then maybe आप सोचोगे why not, if at least Lukaku stays then why not play 2 up front, लेकिन do we play 2 up front? We never do, it's all wishful thinking, नहीं होने वाला। वर्नर एक पूरे सीजन से कितने बार खेला था यार 2 up front, बहुत कम होता है, नहीं होगा। तो अरे नाइस ट्राई यार सराबिया का, लेकिन नहीं हुआ, इट गोज वाइड। तो यार मार्टिनेज टू चेल्सी, weak। Ankit bhai, do you see replacing who do you see replacing Mane at Liverpool? तो यहाँ पर जहां पर रिपोर्ट बता रहे, डार्विन नूनेज इज लुकिंग मोस्ट लाइकली। मैं बोलता हूँ डार्विन नूनेज टू लिवरपूल लुक्स माइटी। मैं बोलता हूँ रीजन ये है कि एक तो भाई वो पोर्चुगीज लीग से आने वाले, ठीक है। पोर्चुगीज लीग से कौन आया था रिसेंटली लिवरपूल में, सब जानते हैं, लुइस डियाज। तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ टॉक्स। आई नो बेनफिका, पोर्टो और प्रोबब्ली राइवल्स, आप नहीं बात करोगे, लेकिन कम ऑन, प्लेयर्स करते हैं भाई। अच्छा, सेकंडली लिवरपूल आप बोलोगे आर लिंक विद लेवेंडोव्स्की, राफेल लियाओ विद अ ब्रिलियंट ड्रिबल, लेकिन नहीं कॉर्नर। लेकिन हाँ, तो डेफिनेटली कमिंग बैक टू दिस, आई वुड से कि लेवेंडोव्स्की टू लिवरपूल इज नॉट अ फिट इन टर्म्स ऑफ द कल्चर जो साइनिंग्स करते हैं वो लोग, तो इट्स वेरी काइंड ऑफ अन लिवरपूल काइंड ऑफ थिंग ना। तो मुझे नहीं लगता लेवेंडोव्स्की टू लिवरपूल होने वाला है। माइट बी प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि अगेन ही हैज प्लेड अंडर क्लॉप, सो मे बी आई एम रॉन्ग, बट it's just that लिवरपूल वैसे नहीं करते साइनिंग, बहुत ही कम करते, at least in recent times। so I am saying, मतलब they won't shed out 45 million for Lewandowski, rather वो करेंगे 45 million for Darwin Núñez after negotiating, और आ जाएंगे Lewandowski to Barcelona, not to Chelsea is what I am calling। मतलब मुझे लग रहा है, मतलब I might be wrong। और what about De Jong, Frenkie De Jong to Man United? अच्छा, as per reports Frenkie De Jong ने बोला है कि यार आई स्टिल प्रेफर चैंपियंस लीग फुटबॉल, आई स्टिल डोंट वांट टू लीव बार्सिलोना। भाई फिर भी यार मैन यूनाइटेड हैज स्टार्टेड ऑफिशियल टॉक्स शुरू हो गए, तो मतलब देयर इज मोर टू इट। आई थिंक क्लियरली, मतलब वो बोलेगा तो ही, अरे भाई क्या टैकल है, क्या टैकल था बुस्केट्स का, इट वाज ऑलमोस्ट अ लंज, लेकिन आई थिंक बचा लिया जॉर्डी अल्बा ने, थ्रो इन हो गया। लेकिन हाँ, इट वाज काइंड ऑफ अ रिस्की वन। यहाँ पर यार रूबन नेवेस वार्मिंग अप, इंटरेस्टिंग, तो मतलब चेंज करने वाला है पोर्चुगल लग रहा है कोई। लेकिन हाँ, जस्ट कमिंग बैक टू द ट्रांसफर्स इन टर्म्स ऑफ लाइक, कौन से बात करें अभी, वी कैन टॉक अबाउट De Jong, 85 million euros if Man United कर सकती नेगोशिएट बैक टू 75 million, आई थिंक इट्स ऑन। मुझे लगता है यार De Jong, द फैक्ट कि टेन हाग के लिए खेला इन द पास्ट, इट कैन बी ऑन, डिस्पाइट नॉट हैविंग चैंपियंस लीग फुटबॉल, बिकॉज इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं इतना ही बोलूंगा। और उसके लिए आई कैन सी डिस्पाइट सीवीसी डील नहीं होने के कारण भी मैं बोलूंगा लेवेंडोव्स्की टू बार्सा लुक्स रियल बिकॉज ऑफ De Jong जाएंगे मैन यूनाइटेड, वो मेरा प्रेडिक्शन है बस। एंड ऑफ कोर्स
चेल्सी में कौन बाकी यार, तो लुकाकू बाकी रहेगा चेल्सी में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट माय कॉल. वी रादर साइन डेम्बेले, वी रादर साइन अ डीएम if Lukaku रहते हैं, Mbappe will only leave PSG after giving them UCL. देखते हैं भाई, अब मतलब उसका मतलब है, मैंने बोला 2 साल में, मतलब 2 साल में जीतना है PSG को UCL. That's what I mean, right? Will they? Let's wait and watch. There are fans looting Liverpool fans outside UCL stadium so that PSG can pay Mbappe wages. ये अच्छा joke attempt था again that way, but I know what he's saying. Why will Lautaro will come to Chelsea if his buddy is coming back to Inter? हाँ, वो सबसे surprising तो ये लगा हर्षवर्धन. For me, it was the most surprising thing that I could think of. Do you see any promoted team in Premier League surprise us with their performance this coming season? I see all of them getting relegated. Fulham यार नॉलेज वाला सीन है. You're right, Kunal. You're absolutely right. Fulham का नॉलेज वाला सीन होता है. तो एक सीजन आती है, एक सीजन जाती है. उसका वही होगा. I am really feeling that. ठीक है, as much as they are literally a neighbors. अच्छा, और बोर्नमथ का मुझे लगता है थोड़ा हो सकता है भाई. स्कॉट पार्कर है एज थिंकिंग पर्सन जनरली, तो बोर्नमथ का मुझे लग रहा है कि हो जाएगा. बाय द वे, टॉकिंग अबाउट बोर्नमथ एंड चेल्सी एज वेल, नेथन आकी, मैन सिटी फैंस आप बोलिए, व्हाई इज नेथन आकी अवेलेबल? इजंट इट शॉकिंग? मतलब मुझे याद है इस सीजन में आई थिंक ही प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, और आई नो लास्ट सीजन में यू नॉट थिंकिंग दैट वो एक बिग साइनिंग है, लेकिन आई थिंक दिस सीजन में टुवर्ड्स द लैटर हाफ उसने काफी गोल लाइन क्लियरेंस भी किया. आई रिमेंबर 2-3 एट द बैक ऑफ माय माइंड. तो नेथन आकी जो एक अडैप्टेबल प्लेयर है इन 3 डिफरेंट पोजीशंस, एंड यू गाइस हैवंट इवन यूटिलाइज्ड हिम इन द डीएम. वो भी खेलते थे पहले. तो नेथन आकी भाई, चेल्सी वुड, आई थिंक आई विल टेक हिम. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. अगर हम 3 द बैक कंटिन्यू करते हैं, आई नो वी हैव अ टेंडेंसी वापस से बाई बैक करने का प्लेयर्स. I will take Nathan Ake. He's not a world-class player, but if you're playing 3 at the back, man, he's not bad at left and back. He's not bad. And also DMB खेलते थे. Think about it, Chelsea. That's what I would say. Okay, but I think Nottingham Forest, I don't see them. मुझे लगता है Nottingham Forest से काफी लोग सेल हो जाएगा. That's my gut feeling. लेकिन Bournemouth I'm calling यार. Maybe they'll surprise. अरे penalty क्या? नहीं. Dive था शायद Portugal almost. लेकिन हाँ, I think Danjuma low-key is a Liverpool signing, and Liverpool would want to spend major money on midfield. Okay. Danjuma is not a bad signing अगर आते हैं, but has he proven over a long term? That's my only question. Luis Diaz ने किया था यार at country level as well and quite to some extent. Danjuma का इतना closely मैं follow नहीं किया, but from what I have, definitely for Villarreal he's been really good this season. Liverpool looking to sign Pulisic as a replacement for Sadio Mane. अरे भाई साहब, really? So Klopp against Pulisic. By the way, half time हो गया है. Half time, it is Spain leading 1-0. Alvaro Morata goal getting Spain the lead. भाई साहब, 25 minutes का गोल था. Portugal, the Ronaldo has to come on. What do you think about Ronaldo, man? He has to come on. Pretty sure. What has Portugal missed? I think मेरे ख्याल से second half और first half में it was really a physical game. ठीक है. फर्स्ट हाफ में स्पेन का जो पोजीशन फुटबॉल था दैट काइंड ऑफ वर्क, और एक जो मोमेंट था ना पोर्चुगल ने ब्रेक किया था, उल्टा स्पेन ने ब्रेक कर दिया वापस. तो इट्स रियली गुड. सो आई थिंक गावी हैज स्टूड आउट फॉर मी. गावी हैज रियली स्टूड आउट. आप बोलिए फॉर यू हु इज दैट प्लेयर स्पेन में जो हैज रियली स्टूड आउट? सराबिया आल्सो. हाँ, सराबिया हैज बीन लुकिंग गुड. ही हैज गॉट दैट असिस्ट, प्लस द फैक्ट दैट वो काफी टैकल्स में ही इज गॉन इन. आई थिंक Sarabia and Gavi for me have been the man of the match. आप बोलिए. What about Carlos Soler? He's not played a lot for Spain from what I remember, लेकिन not bad either. Chelsea should sign Dembele and then see how Dembele Lukaku works. Absolutely. By the way, Dembele Lukaku may not work as well, and the woman will talk you. Lukaku wants a crosser. ठीक है. Dembele is more like, इसलिए Ziyech Lukaku also did not work very well. ठीक है. Ziyech brings the ball to the far post. Problem ये है ना, हमारे far post में problem, you don't have a person who cuts back well, who does not cross back well. वो हमारी problem थी. तो हमारी left wing is a major problem, to be very honest about it. Let's see if Mount can do that at left wing. He did a very good job at right wing, but let's see, and that's something that is still awaited. Rafael Leao, please bhai. Nathan Ake is playing really well this season. Absolutely. और I am reports बोल रहे भाई he is available. I don't know, him और Laporte एक जन जाएगा. क्यों जाएगा पता नहीं यार. क्यों छोड़ गया भाई सिटी? You're winners of the Premier League, man. I can't understand. But Nunez के तो United से strong links है. हाँ, links काफी strong है, but मैं वो domino effect देख रहा हूँ. मतलब do United need a striker more than Liverpool at this point? Arguably no.
So I think if United can keep Ronaldo fit, and the fact that I think मतलब again I don't know about Mason Greenwood भाई, मतलब I know मैं वो टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वही मेसन ग्रीनवुड एक है उनके प्लेयर, ठीक है. What are they doing with him? Remember, he is a striker. He is a striker who can play on the wing. That is what he really is. What are they doing with Marcus Rashford? तो काफी वो भी, so technically they're all strikers. What are they doing with Anthony Martial? तो काफी on the book there are so many strikers. Whereas Liverpool proper striker they just have Firmino. Even Jota is not a proper striker. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और obviously at this point in time अगर आपको ऑफर मिलता है दोनों जगह से, I think let's be honest अभी लिवरपूल जाएंगे लोग, मतलब just for the time being. I'm not again comparing the history and all that. इससे पहले कि people judge me again, too many disclaimers are given आज. Which teams, और by the way यार people are joining in, सब लोग like कर दीजिए stream so that we have more people. And yes यार, जैसे मैं बोला ना, ये people dropped off. Thank you नहीं बोलता हूँ, चलो sorry बोल दिया. Which teams in top 4 this new season in EPL? Acha, does Man City have a chance in top 4? Obviously I see a collapse, but hope it doesn't. Probably it's a sarcastic comment, Haaland coming in, they're obviously winning the league, man. And then that's simply put, like, absolutely great funny, comment which brought a laughter to my face. So thanks for that. Like, I would certainly say, yaar, matlab, mera top 4 again. Everyone, this question goes out to everyone. Who are your top 4 this season in EPL? I mean, it's too early. It really depends on the transfers. But again, the way the links are going, the way transfers have happened, मैं तो बोलूंगा भाई लिवरपूल मैन सिटी तो डेफिनेटली रहेगी, दोनों डेफिनेटली रहेगी, ठीक है. Third might just be Tottenham, the way links are going. Third might just be Tottenham. It pains me to say it, but it's a reality. And fourth मेरे ख्याल से चेल्सी रहेगी. मैन यूनाइटेड अभी ट्रांजिशन सीजन थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू चेल्सी, आई फील स्टिल. अगेन आपका आप बोलिए सब लोग, एंड इवन एनीवन आस्किंग क्वेश्चंस दे कैन आंसर. बाय द वे, just scouted Gakpo for my Chelsea FM 22 save. It said sign as last resort. Laporta playing 5D chess in financial market. He really wants to raise a big money Barca label. Don't worry about that. You'll get another deal. Don't worry about that. Difference between Nations League and Euros. Okay. So there's a huge difference. In fact, Santosh. So basically, yeah, Euros is a very short tournament. And of course, next Euros, I think there are 24 teams. If I'm wrong, correct? I don't know. लेकिन हाँ, generally Euros में there are basically far lesser number of teams. So we are talking about again we have like 32 teams. Yeah, let me check Euros. I'm just checking the format for Euros to 2024 format. Let's see. तो यहाँ पर okay, what is the format? So यहाँ पर जहाँ मैं देख रहा हूँ, अच्छा, so there are 24 teams. There are 32 कुछ ज्यादा हो, वो तो वर्ल्ड कप लेवल का यार. तो 24 teams है यूरोज में. Obviously, traditionally there used to be 16 teams, and then there used to be quarterfinals, semi-finals, and finals. So Euros आप देखते हैं तो quality of Euros काफी high होता है, बहुत close matches होते हैं, because you have all the top European teams playing against each other. लेकिन Nation League में जैसे मैंने बोला, League A is almost like a Euros. You can say that, ठीक है. League 55 teams है, 16, 7. तो 5 लीग्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो लीग ए में जो है 4 ग्रुप्स होते हैं. तो 4 ग्रुप्स अगेन दे आर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी इन बेसिकली लीग ए. और A2 हम देख रहे हैं, सॉरी, ग्रुप 1, 2, 3, 4. तो A2 आज मैच हो रहा है जैसे, तो बेसिकली एवरी टीम प्लेज होम एंड अवे, और राउंड रॉबिन होता है, 6 मैचेस खेलते हैं, देन डायरेक्टली सेमीज होता है, ठीक है. दैट इज व्हाट इट इज वर्सेस द यूरोज. दैट इज द डिफरेंस, राइट. लेकिन हाँ, बेसिकली जो जीतेगा ना, और जो टीम्स हु डू वेल इन लीग A, or the teams which do well in League B kind of get promoted, or teams which do well in League A, they get seedings for the Euros draws. So that is helpful. If Ronaldo doesn't score well, no problem. He will play in World Cup. Legend. Remember Portugal in versus Spain World Cup 2018 group stage, CR7 hat-trick. वही था ना, 3-all था, if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong. Ziyech didn't play with Lukaku consistently. Yeah, point absolutely. But वही है, मतलब think about it. Lukaku is a guy who probably needs the ball coming this way. He doesn't want the ball coming, over the top. Over the top hota to for him, most what matters is the someone who's able to cut back or cross from the left wing. Alonso used to be the guy because Pulisic and Mount were not really taking people on. Okay, Werner definitely is not a winger.
तो इसलिए प्रॉब्लम अलोंसो पर ज्यादा डिपेंडेंसी थी बिकॉज चिलवेल वाज आउट एज वेल. भाई वॉच अलोंग अकेले यू शुड हैव इनवाइटेड मी. अरे कोई नहीं यार, आप लोग हो डेफिनेटली, आप लोग के साथ हो. मैं सोचा यार काफी दिन हो गए अकेले वॉच अलोंग करे हुए, तो करते आज बिकॉज देयर सो मेनी टॉपिक्स टू डिस्कस. तो मैं बोलता यार अपना ही देते. आई हैड एक्चुअली कॉल्ड कपल ऑफ पीपल लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे. तो सडनली नहीं तो वी विल सर्टनली हैव मल्टीपल वॉच अलोंग्स जैसे आप जानते हो. Okay, before the match, I was confused as I'm a fan of both. Okay, fortunately, Davide are not playing. By the way, Ronaldo be bench पर है दानिश. Ronaldo is only fit to be on the bench for this game. As the commentator says, maybe he can come after 80 minutes. Okay, let's see. Let's see. Doubt Greenwood comes back until proven innocent. Well, Trent says men are winning cases. Let's not comment there. You know what I mean. Pulisic only plays for USA and visit London for occasion. ये थोड़ा सा harsh हो गया हर्षवर्धन. I hear you absolutely. मैं खुद बहुत frustrated हूँ. मैं उसका पीक भी देखा हूँ. द गाय हैज एबिलिटी. बहुत यंग है यार, बहुत यंग है अभी भी. मतलब इतना प्रेशर है यूएसए के लिए, तो यू हैव टू गिव इट टू द गेम गाय. बट अगेन बीइंग अ चेल्सी फुटबॉल क्लब, आई एग्री दैट ही हैज टू डू मोर, ही हैज टू डू मच बेटर, ही हैज टू शो दैट ऑन द पिच. आप खाली बातें मत करो. आई नो ही इज कैप्टन अमेरिका, ही स्पीक्स वेल, अमेरिकन एक्सेंट दैट ही हैज, ब्रिलियंट. लेकिन ओनली थिंग इज आई थिंक ही नीड्स टू डू इट ऑन पिच. और यहाँ पर भाई रियल मैड्रिड वाला हाइलाइट्स आ रहे हैं. व्हाट अ गोल मैन बाय वर्नर यार वो. लेकिन मैच मैन रियली painful match for a Chelsea fan. Like, and again, this season, Premier League winners: Spurs, City second, Liverpool third, Chelsea fourth. Hi, sahab. My favorite team, Real Madrid. My favorite player, Cristiano Ronaldo. Sham, welcome to the stream, bhai. Ankit, bhai, your changes in the lineup for Spain and Portugal second half. Yeah, honestly, I don't see any changes unless Ronaldo fit है. To be very honest, 1-0 ही है. ऐसा नहीं है कि स्पेन ने एकदम धो डाला है पोर्चुगल को. आई थिंक दोनों ही टीम्स के साथ चांसेस थे. राफेल लियाओ हैड अ फ्यू couple of good chances, I would say, or he has the ability. It's just that I think Bernardo Silva टैक्टिकली थोड़ा चेंज कर सको तो कर लो. मे बी ओटावियो कम्स ऑफ. हाँ वो बता सकते हो. ओटावियो कम्स ऑफ एंड यू हैव बेसिकली मे बी इवन आंड्रे सिल्वा कमिंग ऑफ. जब भी हो तो रोनाल्डो कमिंग ऑन एंड यू हैव बर्नार्डो सिल्वा गोइंग इन द विंग. ठीक है, वो एक हो सकता है. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. और मे बी यू हैव जोटा और रोनाल्डो दोनों आ जाए instead of basically Otavio and Andre Silva. But अभी टैक्टिकली करूंगा, बोलूंगा बर्नार्डो सिल्वा आप थोड़ा आगे जाओ यार. आप टैकल्स में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो. Difference between Euros and UEFA Nations League is the sponsors. What the hell Fernando Santos is doing? He cannot, as I said, he is really underwhelming when it comes to real good teams. That's the problem with Fernando Santos. Too much attacking talent at his disposal. Maybe the modern Jose Mourinho, unfortunately, what he cannot bring is what Fernando Santos has become. He was a great coach, absolutely. अभी भी मैं बोलूंगा यार, he has learned, he has improved in the last few months. मैंने देखा था यार प्लेऑफ में, आपने देखा था अगेंस्ट टर्की. दैट वाज अ रियली गुड टैक्टिक इन सेकंड हाफ. नेक्स्ट वीक में राइट विंग में रियल मैड्रिड किसको लाएंगे बोलो. अच्छा शाम, मैंने वही बोला है कि यार Gnabry is looking very likely from what I hear, but I don't think Real Madrid fans should panic. I think you're good with Rodrigo and Valverde. अच्छे यार, Valverde can do a decent job वहाँ पर at least for half a season, and you will get a good signing by January. It's too early to predict, but I guess City, Tottenham, Liverpool, Chelsea, and Arsenal will win hearts but not matches. Bruno is lacking key component. Amar Reddy, welcome, hi, welcome. Lacking key component. Okay, in the last 20 minutes that I saw in the first half, that's his brain. अमर भाई मैं सोचा क्या ही तो आ रहा है यार कमेंट. और सॉरी भाई, हंसी आ गई मुझे तो यार. अमर सीरियसली, टू मच फुटबॉल फ्रॉम जून टू दिसंबर. नेशंस लीग, प्रीमियर लीग, ला लीगा रेस्पेक्टिव लीग्स. ब्रिलियंट ईयर होने वाला है. और वही नहीं यार, क्रिकेट के लिए भी होने वाला है ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पर. वो भूलना. यस, बाय द वे देखने अभी चेक करने. आई होप वी हैव रीच्ड 150 लाइक्स होपफुली. आई डोंट नो. अरे भाई साहब ऐसे शौक मत दिया करो यार. सब लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, जो भी नहीं किया है. वी हैव 134 वोट्स, सो होपफुली वी गेट टू 134 लाइक्स एज वेल. अभी यार कर दो यार सब लोग लाइक, जो भी नहीं किया प्लीज कर दो. और भूलना मत भाई, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस वो भी है चैनल, अपना दूसरा चैनल है, वहां पर भी बहुत कंटेंट आ रहा है. बर्नार्डो और ब्रूनो, वन ऑफ देम शुड बी सब्स्टिट्यूटेड. इंटरेस्टिंग. मतलब अगेन द फैक्ट दैट वो दोनों गोल स्कोर कर सकते हैं ना ज्यादा दैन ओटावियो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओटावियो इजी टारगेट है.
भाई पुलिसिक इज पोटेंशियल, बट जब से यूएसए क्वालिफाई हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, हिज डिमांड इज एक्चुअली चेंज। मे बी कौन सी टीम ज्यादा प्रिपेयर कर लग रही है, पोर्चुगल और अर्जेंटीना? एनी डे अर्जेंटीना भाई, अर्जेंटीना इज लुकिंग प्रिपेयर्ड, आई एम टेलिंग यू। मतलब एक होता है ना, मतलब आई नो इट्स वेरी इजी टू से, आप जब जीतते जाते हो, लेकिन अर्जेंटीना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लग रही विद अ प्लान, दे आर लुकिंग दैट साइड। और कल भी मेरे ख्याल से मैंने किया भी था वॉच अलॉन्ग में कमेंट कि उन्हें एक्चुअली कम से कम 4 से 5 गोल स्कोर करना चाहिए था। आई बिलीव दैट लोसेल्सो थे जो एक प्रॉपर चांस मिस किए थे, आई रिमेंबर दैट। सो देयर इज अ आर्गुमेंट देयर। अंकित भाई, वी शुड बी ऑफिशियली नेम्ड एज इंटरेस्टेड एफसी। Every summer we are interested in to many world class players, and reality we sign Saul Niguez on loan. नहीं यार, it's just a start. Ayush, don't worry. Ankit bhai, you being Chelsea fan, you're feeling an opinion on Courtois' performance at Real Madrid and KDB City. अच्छा, the biggest regret for me has to be Kevin De Bruyne. Courtois is not a regret, ठीक है? Kevin De Bruyne definitely a huge regret. मैं तो बोलता हूँ arguably he is the best player in the world. Okay, on form. Again, people before they quote me and say that यार आप मेसी रोनाल्डो को बोल दे, भाई वो लोग अलग ही लेवल पे हैं, उनसे मैं कंपेयर नहीं करता। मैं बाकी लोग का बोल रहा हूँ। KDB for me arguably the best player in the world. मे बी साला आप बोलोगे, मे बी वर्जिल वैन डाइक, मे बी कोई लोग बोलेंगे रूडिगर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन फॉर मी केडीबी इज अ कंप्लीट फुटबॉलर ऑलमोस्ट, राइट? कोर्टुआ, यस, गोलकीपर, हाउ विल यू कंपेयर? बट द फैक्ट इज यार, हिज एटीट्यूड इज एन इश्यू। उसका बेसिकली नॉट एटीट्यूड, हिज माउथ इज एन इश्यू। I'll be very honest about it. Courtois is fantastic, fantastic as a keeper. Is fantastic. He was fantastic at Chelsea also. ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये खराब था कभी भी, लेकिन वही है, his mouth is the problem. Every international break you will see it, when he kind of gets more kind of freedom or just confidence. वो और confidence में बदल जाता है कभी कभी, वही प्रॉब्लम है। नहीं तो इज अ फैंटास्टिक कीपर, एब्सोल्युटली। तो आई डोंट हैव एनी कॉम्स अबाउट कोर्टवा भाई। व्हाट हैज हैपेंड टू ब्रूनो? किसी ने यार प्रॉब्लम है ना, वो ज्यादा कुछ ट्राई करता है, कुछ ज्यादा ही ट्राई करता है। मतलब एक तो यार when you don't have a ball to play, why are you playing? कोई है ही नहीं वहां पर, कौन क्यों खेल रहा है? और यहाँ पर भी टैकल्स जबरदस्ती कर रहा है। तो आई थिंक he's a like, I don't know, he wants to be a winner always, लेकिन problem is he cannot win every ball, he cannot basically pass every ball to perfection, and that's something that उसे समझना चाहिए। he should be a little bit more selective। वो एक प्रॉब्लम है ब्रूनो में, लेकिन आई वोंट से दैट यार व्हाट हैपेंड टू ब्रूनो वैसा, मतलब कम ऑन। फिर भी मतलब आई थिंक ही हैज बीन डिसेंट ओवर द लास्ट सीजन, मतलब फिर भी ही हैज गॉट गोल्स एंड असिस्ट, राइट? आई वांटेड टू वॉच दिस गेम ओनली फॉर जोटा, रोनाल्डो एंड थियागो। तीनों नहीं खेल रहे। आएंगे भाई, तीनों आएंगे। मतलब रोनाल्डो और जोटा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आएंगे। अगर अच्छा चलो 75 मिनट पर नहीं आया ना, तो मैं बोलता हूँ कि आई लूज अ बेट, ठीक है? लेकिन हाँ, सर्टेनली थियागो इज लिटिल डाउटफुल, क्योंकि 90 मिनट्स भी खेले थे फॉर लिवरपूल, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। डिस्पाइट आई थिंक थोड़ा इंजरी कंसर्न था, आज तक पता नहीं चला यार वो क्यों ऐसे डाउन थे बिफोर द चैंपियंस लीग फाइनल। बट एनीवे, जोटा रोनाल्डो तो डेफिनेटली आई थिंक मेरे ख्याल से आने वाले यार, दैट्स अ नो ब्रेनर। Bernardo and Joe Moutinho both are in yellow card, yeah, that's a good point, Bernardo लेकिन नहीं, I would say, हाँ, लेकिन Bernardo थोड़े hot headed है तो हो सकता है, लेकिन on paper Spurs are greater than Chelsea at present, pains me to even read that, लेकिन नहीं यार, I don't agree with that. We have Thomas Tuchel who understands Chelsea more than Conte understands Spurs as of yet. Both are great coaches, I think that's the difference. I still feel that we are having a better squad as things stand, but चेंज आ गया भाई, Moutinho is off. Bang, you're absolutely right. Moutinho is off and on comes Ruben Neves. हम देखे ही थे, he was warming up. So say that way. The problem for Fernando Santos is that he is not really okay. He got really good squad. हाँ, मतलब he has too many good options. Maybe the problem जो Tuchel के पास थी at Chelsea, you can say that. अरे थैंक यू भाई ईश्वर, थैंक यू। मतलब अगेन, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो यार भूलना मत, हमारा दूसरा चैनल भी है, सो डू कम देयर एज वेल जब भी हम लाइव हो। लेकिन नॉट जस्ट दैट, आई हैव पुट अप अ पोल टुडे, सो इट बी इंटरेस्टिंग हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर मेंबरशिप। Gavi 17 years old and he's dancing with Fernandes. Gavi has been the best player for me यार, I have to say it. भैया कीप ऑन ग्रोइंग, यू आर रियली वर्किंग हार्ड यार, मतलब थैंक यू यार। मतलब अगर आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का प्यार है, मतलब इसलिए कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्किंग हार्ड एब्सोल्युटली। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं देखूंगा, मैं देखता हूँ यार मैच तो ऐसे ही देखना है, ठीक है? और मैं अकेले बैठ कर देखूं मैच, उससे बेटर है कि मेरे दोस्तों के साथ देखूं। यू आर माय फ्रेंड्स, सो दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग इट अलोंग विद यू ऑल। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई फील दैट ओके, आई थिंक आई हैव लिटिल अबाउट ऑफ नॉलेज। अरे
ऑलमोस्ट ओन गोल हो जाता यार, लेकिन नहीं, पेपे का। लेकिन वही है, मतलब आई एम जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग व्हाट आई थिंक आई नो एंड लर्निंग फ्रॉम यू ऑल एज वेल। एनरिके टू पोर्चुगल, लो तुम पिट गए। भाई भाई जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है क्रिकेट भूल गया हूँ। अरे कोई नहीं, हम वापस से याद दिला देंगे यार, वर्ल्ड कप ईयर है T20 का इस बार तो। अर्जेंटीना विनिंग बट आई डोंट लाइक द प्लेइंग स्टाइल। क्यों भाई, मतलब बैकमैन, मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो उनका प्लेइंग स्टाइल इंप्रूव हुआ है नहीं, मतलब द फैक्ट दैट वो मेसी इज अ फ्री प्लेयर, ही काइंड ऑफ रोम्स अराउंड, मरिया डी मरिया बीइंग अ प्रॉपर विंगर। अरे पोर्चुगल ने हक दिया, Spain almost got it, लेकिन good tackling in the end by Portugal again. By the way, what do you all think? यार, Jose Font is not in the Portugal squad. What do you reckon? उसका क्या reason होगा? Interesting वो मेरे लिए थोड़ा। लेकिन prediction of Denmark versus France tomorrow. वहां पर ना अगर क्रिस्टियनसन खेलते ना डेनमार्क के लिए, तब फ्रांस फेवरेट्स, पुट इट दैट वे। यू नो व्हाट आई मीन सात्विक, बट आई थिंक फ्रांस आर फेवरेट, वी ऑल नो दैट फ्रांस आर फेवरेट, और फ्रांस जीतना चाहिए यार, कम ऑन, दे शुड विन इट। डेनमार्क इज अ फैंटास्टिक टीम एज वेल। क्रिस्टियन एरिक्सन भाई, आई थिंक प्रॉब्ली इज देयर और नॉट, लेट मी चेक। लेकिन हाँ, क्रिस्टियन एरिक्सन को देखना मिलेगा तो विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन हाँ, राफेल लियाओ भाई, अलग ही लेवल है प्लेयर, लेकिन हक दिया लास्ट बॉल, दैट इज द प्रॉब्लम विद लास्ट डिसीजन मेकिंग में, ही स्टिल नीड्स इंप्रूवमेंट। लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ पर कार्वाहाल और रोनाल्डो हकते हुए ये वाला हक। अर्जेंटीना 2018 राउंड ऑफ 16 लॉस के बाद से प्रिपेयर रहे हैं, मैनेजर चेंज किया, स्काउट किया, बेस्ट प्लेयर्स को मेसी इन्वॉल्व हुआ टैक्टिक्स में एंड टीम बॉन्डिंग। Scaloni, man, Scaloni. I have to give it to Scaloni. I have to give it to him. And of course, Messi as well. Seniors have helped. Di Maria, Messi हो गए, Otamendi हो गए, तो काफी हेल्प मिला Scaloni को. Pretty sure on that, right? लेकिन yeah, which club teams can Neymar go when he leaves PSG? Chelsea, definitely leaving. Wish he goes. Oh, he's definitely leaving. I hope he comes to Chelsea. I know a lot of Chelsea content creators are not wanting that. Why, man? I know Baba ने बोला है कि he's definitely an upgrade अगर आता है तो, and that's what I agree as well, 100%. Like, what is the problem? Tuchel has played with him. Try to karo yaar, big deal. With Chelsea Football Club, try, man. That's what I would say, absolutely. मतलब again, it should be affordable. So less people watching. अरे कोई नहीं यार, जो भी है, they are really valuable to me. And of course, जो नहीं देख रहे, pretty sure they will still be watching if you guys are able to share the stream. Social media में मैं किया हूँ post, if you can even like it on Twitter, on Instagram. I am there as Almighty Blues FC. But if not, also if you can just share, on your groups, if you have any footballing groups in WhatsApp, etc. Please करिए। लेकिन जो भी है, आप भी बोलिए। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन एंड डू पुट इन योर कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अभी तक गेम में कौन इज द स्टैंड आउट प्लेयर, क्या होने वाला है गेम के बारे में, हु विल विन द नेशंस लीग ऑल टुगेदर, लेट मी नो। वेटिंग टू सी आंसू फाटी, इवन मी, आंसू फाटी इज द गाय, मतलब एनिग्मा जो बोलते हैं ना, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन स्पेनिश फुटबॉल, ही हैज टू प्रूव ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एंड ही इज फिट इनफ होपफुली इस सीजन में। आई रियली लव द गाय एज is Gavi in Pedri again. अरे हैंडबॉल है क्या? दनीलो परेरा का हाथ लगा है डेफिनेटली, लेकिन इज इट बॉल टू हैंड और हैंड टू बॉल? इंटरेस्टिंग अपील रहा, आई थिंक, इफ आई नॉट रॉन्ग, सराबिया विद अ शॉट, लेकिन इंटरेस्टिंग वन। भाई मेंटली थोड़ा वीक हो गया ब्रूनो आफ्टर हाउ द सीजन एंड, मे बी रैग्निक ने जो किया वाज नॉट राइट, बट स्टिल आई से ब्रूनो शुड हैव वेटेड बिफोर साइनिंग फॉर 5 ईयर डील। आई एग्री विद दैट 100%। हाँ, थियागो स्पेनिश है, एब्सोल्युटली। मैंने क्या बोला, स्पेनिश नहीं बोला था क्या? मे बी बाय मिस्टेक। एनीवे, कैन यू सी द गेम ऑन दिस? Philip, you cannot see the game on this, but you can definitely see my reactions to the game. अरे मोराटा का था, मोराटा got a shot in. It is going to VAR from what I understand. I believe it might be a penalty. नहीं, लेकिन नहीं दे रहा लग रहा है. It is kind of a throw in. Strange. यार handball rule भाई कोई बताइए. मतलब again, ball to hand, you can say. So fair enough. So Philip, yes, I hope you have subscribed to this, but not only this, we are having another channel called Almighty Sports Plus. We discuss a lot of football and cricket on the other channel. On this channel, we discuss a lot of football, but the idea is to cover end to end, and not just that, we are bringing a lot more content. So do check out our playlists. We have variety of content. यहाँ पर अच्छा wing play again by Portugal. Man, थोड़ा end to end game शुरू हो गया है second half में, मजा आएगा second half में. Why shouldn't Fernando Santos be sacked and Deco be signed a new manager before? I think it's the wrong timing.
अगर करना ही था ना, उन्हें करना चाहिए था बिफोर दैट प्ले ऑफ सेमीज, बिफोर द प्ले ऑफ सेमीज उन्हें करना चाहिए था। आई थिंक इट वाज अगेंस्ट टर्की। उसके पहले देयर वाज लॉट ऑफ शाउट कि होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आई थिंक ही हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। We really want to support you भैया, always with you। अरे थैंक्स यार, मतलब आई होप आई कीप गेटिंग इट। एंड अगेन, आप लोग अगर अच्छा भी नहीं लग रहा ना कंटेंट, तो फील फ्री टू लेट मी नो, यू नो व्हाट आई कैन वर्क ऑन। बट अगेन आई ट्राई एंड गिव वैरायटी, क्योंकि यार अगेन वैरायटी ऑफ एजेस है, वैरायटी ऑफ ज्योग्राफी, यू नो, इज व्हाट आई कवर। सो होपफुली सब लोग को अच्छा लगे। एंड ऑफ कोर्स it is a fan channel for all to see, like I say always on Almighty Blues FC, and the other one as well, keeping you in the game. That's Almighty Sports Plus. Joseph Font is great at winning aerial duels. Did you get it? uh Otherwise, I did not get it. Let me tell you. लेकिन पता नहीं बाकी लोग got it, but Jose Font is great at wearing aerial duels. I'm not sure यार if I get this one. पता नहीं, मेरा mind blank है। Otherwise, लेकिन thanks यार, आपके मतलब हंसी दिला देते हो, मतलब that's the best part. Why do you think PK banged the well, हर्षवर्धन, as per reports, आंसर इज यस। अब वो क्या टेक्निकली क्या क्या किया है उसको ही मालूम है, ठीक है हर्षवर्धन, लेकिन जो किया है गलत किया है। लेट्स पुट इट दैट वे, जो किया है गलत किया है। एंड पता नहीं भाई ये होता क्यों है फुटबॉल में, मतलब दीज गाइज आर हैविंग ऑल द लैविश थिंग्स एट द डिस्पोजल, फिर भी बेसिकली दे लूज ट्रैक। आई डोंट नो, इट्स इजी टू लूज ट्रैक आप बोलोगे, मे बी दैट आप यू आर टेम्प्टेड, आई डोंट नो, इट्स रियली रॉन्ग यार, इट्स रियली रॉन्ग। मतलब व्हाटएवर मे बी द रीजन, यू कैन ऑलवेज हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट इट बिफोर डूइंग इट, राइट? लेकिन आई डोंट नो, मतलब इट्स अ पर्सनल मैटर, आई वोंट कमेंट देयर। हाँ, नेमार इज सेल्फिश एंड मोर इगोइस्टिक। भाई गौरव, नेमार आपसे कब मिले भाई, आप बोलिए। लेकिन आई नो व्हाट यू मीनिंग इन टर्म्स ऑफ बेसिकली, यू नो, इवन कीपिंग द बॉल, नॉट गिविंग द बॉल अवे इनफ, मे बी डाइविंग एट टाइम्स, यू नो, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं इन ब्राजील टीम एज वेल, हमने देखा है टाइम्स। बट कम ऑन, हिज नेमार यार, वो टैलेंट है, मतलब यू सी द बिगेस्ट टैलेंट ऑलवेज हैड दैट। आप अच्छा एरिक कैंटोना के बारे में क्या बोलते हैं? Very honestly, मतलब होते हैं भाई। Your top players are like that, you know. Drogba was at a time very, you know, kind of frustrating as well as a player. लेकिन again, I think with Tuchel things can be little bit different, क्योंकि उन्होंने खेला है और बोला है कि Tuchel के लिए जान देने को तैयार है पहले। Oh man, Neymar is my favorite. I would love to have him. Chelsea, same here. What will happen? First, RCB wins IPL, Man City wins UCL, PSG wins UCL, English football team wins Euros, New Zealand cricket team wins. Wow. This is the comment of the day. This is the question of the day. Thank you for this question. You know, I am starting that question here. I have no answer to this. Virat Sir causes Messi joins Real. Oh man, hilarious one, man. Brilliant question here. I have no answer to this, but to be very honest about it, RCB winning IPL. So let's go with that. Would you sell? No, no. West Ham hammer का साइन है ना, ऐसे कुछ hammer ये लीजिए आप। नहीं भाई नहीं। Come on, let's actually not do that. Let's be very honest about it. N'Golo Kante or Declan Rice cannot be put in the same sentence. It's real. Declan Rice is the most improved player in England. लेकिन N'Golo Kante is the best player in England in the last 5 years put together. मैं तो ये मानता हूँ भाई, आप लोग नहीं मानते हो तो पता नहीं, मैं ये मानता हूँ। When he's at his A game, no one can beat him. Matata United in the house. Thank you. अरे क्या हुआ, क्या कुछ डर्टी गेम्स हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, all good यार. Don't worry about it. Lekin hopefully, you know, we are growing every day, and that kind of grows always. Ankit very well aware of Deco's skills in Chelsea. Yeah, absolutely, भाई पहला ही गोल उसका याद है डेविड जेम्स के साथ। और I was, you know what? अच्छा एक चीज मैं बोल देता हूँ यार। अच्छा गेम में वापस टैकल शुरू हो गए by the way meanwhile. Pepe with a good clearance. अच्छा जब मैं डेविड जेम्स से मिला था ना, आई डोंट नो पीपल इफ यू नो, आई गॉट द ऑनर ऑफ मीटिंग डेविड जेम्स ऑनलाइन, यू नो, व्हेन वी वर देयर ऑन सोनी टीवी टुगेदर अंडर जॉन डाइक्स. सो I thought what should I tell him? अरे नाइस क्रॉस मैन, स्पेन, बट ओके गुड क्लियरेंस। ओटावियो ने क्लियर किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओटावियो ने क्लियर किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चीज तो भाई साहब, व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पर? Was it Otavio playing right back almost. Interesting. कैंसलो यार बहुत ज्यादा सामने जा रहे हो क्या? लेकिन हाँ, तो डेविड जेम्स का 2-3 मोमेंट्स थे अगेंस्ट चेल्सी। वन वाज हिज पॉम्पी टीम जो उन्होंने कैप्टन किया था अगेंस्ट चेल्सी, ठीक है, और जो चेल्सी जीत गई थी 1-0, ठीक है, एफए कप में, फाइनल का एफए कप का था। वी बीट हिज पॉम्पी साइड। इट्स 2000
2009 था क्या, 2008 9 2008 2009, कोई नहीं यार, मैं मेमोरी में जा रहा थोड़ा, लेकिन वही है, one of those years 2008-9 जब हम बैक टू बैक जीते थे ना एफए कप, one of those years we played Pompey, he was the captain. अच्छा, एक और जो था ना वो था डेको का मोमेंट. डेको स्कोर्ड हिज फर्स्ट चेल्सी गोल अगेंस्ट डेविड जेम्स. इट वाज अ लॉन्ग रेंज एफर्ट, बहुत ही अच्छा गोल था, बट आर्ग्यूबली डेविड जेम्स भाई साहब को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक बहुत ही चीकी होता, तो मैं वो बोला नहीं. I was just humble enough to say that okay, your Pompey side which you captain, almost beat us in the FA Cup final. तो वो हंस दिए उस पर, तो that was interesting. अंकित भाई, आप करते क्या हो यही बता दो यार. मैं बेसिकली एक तो यार मैं पागलों जैसे स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ सबसे ज्यादा, ठीक है. देन एक है डेफिनेटली दोनों चैनल्स चलाता हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई माय बैकग्राउंड इज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु हैज टर्न इनटू आईटी स्टाफिंग मैनेजर. आप देखो मेरे फेसबुक अकाउंट भी है, अंकित राणा करके है. नीचे आपको लिंक मिलेगा सब, अगर आप लैपटॉप में देखो डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. So I have had experience of lot of years of working in the corporate, both as a software engineer or as a staffing delivery manager. ठीक है, तो kind of doing a lot of things, लेकिन हाँ obviously preference is YouTubing and talking about sports. और मैं खेलता भी था स्पोर्ट, जस्ट टू लेट यू नो. क्रिकेट मैंने खेला है, फोर्थ डिवीजन क्रिकेट खेला है मैंने, बहुत क्लब क्रिकेट खेला है. फ्रॉम बैंगलोर के अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स है. आई वाज लकी इनफ टू रब शोल्डर्स अंडर देयर काइंड ऑफ मेंटरशिप इनडायरेक्टली. I was basically playing, at a level where, I was seeing basically आंखों से देखा रॉबिन उत्तपा को playing, with basically hitting sixes because we were in a similar batch. लेकिन हाँ फुटबॉल मैं ज्यादा शौकिया खेलता था फ्रॉम बिफोर, लेकिन यहाँ पर मेरे बारे में नहीं बात करके रोनाल्डो के बारे में बात करते. दी गोट, बिकॉज वन ऑफ द गोट्स, अगेन बिफोर पीपल क्लिप मी, he is coming on. Ronaldo is coming on, Nikhil bhai and everyone. Arial is type of font. Oh, okay. Arial is a type of font. Now I get it. अबे यार मैं और मेरा ट्यूबलाइट. मोराटा के गोल देखने पुरानी यादें ताजा हुई. Neymar won track back defensively and Premier League. I have a point, Gaurav. मतलब अच्छा point है, काफी अच्छा point है. By the way यार भाई साहब, what is this? One ball by Diogo Costa और पोर्चुगल राफेल लियो कर दो स्कोर. आई कांट बिलीव इट. उनाई सिमोन ने सेव दैट. राफेल लियो भाई, मैं इतना प्रेस किया हूं आपको. राफेल लियो should have scored that. Let's be honest about it. What a superb ball there by Diogo Costa. I have to give to Diogo Costa, जो है पोर्चुगल कीपर. वन बॉल बैंग और वापस एक पास टू राफेल लियो, प्री असिस्ट हो जाता डियोगो कोस्टा का, लेकिन नहीं हुआ. लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू नेमार, like there can be a way यार. PSG में जो टुकुल खिलाते थे, why not? I know Premier League is different, लेकिन you have more defensive players in midfield. You have one person who passes the ball up front. आपको चाहिए basically एक free up front anyway, so why not have your left forward, kind of roaming around. अरे ऑलमोस्ट ओन गोल हो गया, लेकिन नहीं. नाइस हेडर, नाइस क्रॉस था पोर्चुगल का. लोरेंटे विद अ नाइस हेडर, कॉर्नर हुआ पोर्चुगल का. लेकिन आप देखो, मैं एग्जांपल दूंगा अर्जेंटीना का क्यों चल रही है. मेरे ख्याल से अर्जेंटीना ने क्या किया है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्ड किया. तो स्ट्रक्चर होने के बाद दे आर काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग विद द थिंग्स, लेकिन व्हाट दे आर हैविंग, दे आर कीपिंग द स्ट्रक्चर अभी भी. तो दे आर still having that 4 at the back or the 3 midfield. They are not moving up front ज़्यादा, or they are having Di Maria kind of switching flanks. Messi is a free guy और Lautaro Martinez is your number 9. ठीक है, तो वैसा खेल रहे हैं. तो why not Chelsea can do the same thing? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ 4-3-3 we should change. अंकित मुराटा को का गोल अभी तो पढ़ लिया था मैं. PK inspired by Murli Vijay. You know what, I really feel man for Dinesh Karthik and stuff. I really feel, well, again maybe I don't know full story, lekin I really feel for him, man, and hats off to the guy, man. Hats off to the guy. Ankit, how was King Eric Cantona selfish? So what I meant is basically, okay, when you are a striker, when you are a proper striker, you need to have, you have एक moment होता है that you are playing for yourself. You are definitely playing for yourself in some moments, that you have to basically know, I am the man, I am the big guy here, I need to put in the goal. And that's what I think some strikers, it works for them. And Eric Cantona, I felt that he had it in them, and I'm again praising them again. Yeah, I don't know why maybe I'm misunderstanding your question, but I think
I am being judged far too often today for some reason. It's not my day, but maybe the selection of words is wrong. Maybe the way I'm putting it is not coming across right. Like the idea is I was praising Eric Cantona there. I don't know if you got it wrong. PK scammed his club. His deals behind did deals behind people's back. Yeah. That was news 2 months ago. Backstabbed his friend and teammates, and now cheated on Shakira. Never seen a bigger hypocrite than this loudmouth bitch. Top tier. Very, very strong comment coming from a Barca fan. I can understand what you mean. But again, personally, I don't like, if that's true, I don't like such characters. That's just me. Talk about Virat 100. Virat, when he started off his career, he was known to be a lot of it, but he's changed as an individual, right? And I respect the way that he's able to change, he's able to grow as a man. By the way, Andre Silva coming off, not a great game. Not a great game, Andre Silva, as usual. And Gede is coming on, and who else is coming on? No, Ronaldo is coming on, Bhai Sahab. Ronaldo is coming on. CR7, Otavio is off. Interesting, they have not got Diogo Jota. Interesting. Although PK news was fake. By the way, 62nd minute है, तो one was right. मैंने बोला था 75 minutes के पहले आ जाएंगे दोनों. Jota, Ronaldo, शायद आप देख रहे तो. Although PK news was fake, a parody account posted it. Okay, interesting. Waiting for your membership. Okay, absolutely. Hope someday I'll be able to join your stream or a podcast. देखते हैं भाई, मतलब that is a long way from now. Honestly, मैं बोलूँ तो because of what happened with me the last few months, if you remember, last 1 month. Soler going off, Koke coming on. मुझे लग ही रहा था थोड़ा strength लाएगी midfield में, थोड़ा steel लाएगी. That's probably what Koke brings. Romano has reported PK to Juve. He is incredibly inspired by club culture of cheating. मैं वही बोल रहा था कहाँ है. अरे thank you man, thank you. Will tell my friends to subscribe. Absolutely, hope it grows, and do not forget we have an Almighty Sports Plus as well. I want really both the channels to grow. That's just my wish and request. If you guys can help me, fantastic. But again, if you have criticism, bring it on. I'm open to all kind of feedback. Ankit bhai, please get in. चलो मैं get in BC चलो बोल दिया. आपने जो लिखा है वही पढ़ाऊं, कोई नहीं. Mendy needs to improve his distribution. There have been many instances when distribution is not good. He struggles playing from the back. Interesting point, absolutely. Ankit, not judging you, but drilling you to get the best from you. Okay, fair enough. I think it's fun to banter you with explanations. I know. You know what? What is the word, man? As in, I don't know. I'm not getting the word. Basically, gullible. I am basically gullible. Put it that way. I think it's the right word. अगर इंग्लिश को जानता है, अच्छा मेरा इंग्लिश इतना अच्छा भी नहीं है. और एक गोल होने वाला है भाई, स्पेन का नहीं हुआ. Morata, man, Morata did a Morata. लेकिन Sarabia is having a brilliant game, I must say. Sarabia surprisingly has been, along with Gavi, the best player for me on the pitch. I'm gonna get cooked, but I honestly think Harry Maguire is less of a problem than Bruno Fernandes. Oh wow, big comment that. नाइस वन. अच्छा बाय द वे यार, ट्रांसफर न्यूज पर वापस आ जाते थोड़ा सा, क्योंकि यार यहाँ पर थोड़े बात कर रहे थे हम लोग. तो अगेन लोटारो मार्टिनेज टू चेल्सी मैंने बताया था, तो स्पर्स एज वेल मैंने बताया था वीक है, तो मुझे नहीं लगता होने वाला है. लोटारो क्यों तो जाएगा स्पर्स एज अ बैकअप, और क्यों तो आएगा चेल्सी, बिकॉज ही इज नॉट द मेन नंबर 9. ठीक है, और वी डोंट प्ले फॉर 2 अप फ्रंट अलोंग विद लुकाकू. नहीं खेलने वाले, मेरे ख्याल से नहीं होगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं, टॉकिंग अबाउट हैरी मैग्वायर एंड ब्रूनो फर्नांडिस. आई नो फ्रेंकी डियोंग के बारे में बोला था, मुझे लग रहा है कि अगर वो 75 मिलियन यूरोज का कर देते हैं, आई थिंक इट्स अ विन विन. ठीक है, लेकिन on the other hand, it's about him being convinced about playing under Ten Hag rather than needing UCL. What about people, Paul Pogba leaving? What about Juan Mata leaving? What about Jesse Lingard going? What do you think? But any United fans in the house, please tell me. Paul Pogba to Juventus, as per the reports, latest reports ये बोल रहे हैं, they have offered 8 million euros net per year plus add-ons. काफी पैसे होते हैं, simply put. 8 million euros per year net plus add-ons. Wow. Paul Pogba going back to Juventus. भाई इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर और उधर से इधर, यही हुई है पॉल पॉगबा की स्टोरी, और बीच में एक वर्ल्ड कप जीते. ठीक है, ब्रिलियंट प्लेयर फॉर यूवेंटस ही वाज, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट बेसिकली, अच्छा एक और बंदा टॉकिंग अबाउट यूवेंटस, डिबाला. नाउ डिबाला एज पर रिपोर्ट्स
तो पॉल पॉगबा गोइंग टू यूवेंटस, जल्दी से रेट कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ माइटी, माइटी लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ ऑल माइटी बोल रहा हूँ। आई डोंट थिंक he'll go to PSG, आई थिंक he'll go to यूवेंटस। ठीक है, डिबाला टू इंटर, यू नो व्हाई इट लुक्स लाइकली, वो मैं बोल रहा हूँ वो माइटी है। देयर इज अ स्लाइट चांस कि प्रीमियर लीग आए, मे बी एंटोनियो कॉन्टे कन्विंसिंग, लेकिन नहीं, कुलुसेस्की ऑलरेडी इज देयर इन दैट पोजीशन, काफी अच्छा किए। लुकास मोरा कहीं जाने नहीं वाले, भगवान के लिए अभी क्लब नहीं मिला है, तो मुझे लगता है क्लियरली फॉर मी डिबाला विल स्टे इन इटली। प्लस द फैक्ट दैट उन्होंने बोला है कि आई लव स्टेइंग इन इटली, आई लव इट, तो मुझे नहीं लगता ही विल लीव इटली। और इंटर मिलान, mighty Inter Milan, Fateh थे कल, in the house, he was saying it as well, he would love a Dybala, he's probably looking back to Dybala coming rather than Lukaku back, मतलब that tells you a lot, right? Talking about Juventus as well, Di Siglio, उनका जो I think left back है, full back, he has extended। अच्छा, काफी लोग बोल रहे थे he is out of contract, not a bad option basically to sign as a backup full back, but he's extended। I believe he's extended till June 2025। भाई, तो 3 साल के लिए एक्सटेंड करें, तो he'll stay as a Juventus player। So Juventus are not going to change much in the full back position। I think उनके पास है प्रॉपर, I think Danilo है। अरे नाइस पास स्पेन के लिए, लेकिन नहीं, वाइड मैन, जॉर्डी अल्बा वाइड, नाइस, नाइस रन था जॉर्डी अल्बा का, आई थिंक नाइस थ्रू पास ओवर द टॉप। अच्छा, इट वाज अ फ्री किक, बुस्केट्स ने अच्छा लिया था, लेकिन एनीवे, coming back to this, so they have Di Siglio, they have Cuadrado, they have Danilo, और they have obviously Sandro। तो काफी अच्छा है उनका कवर, मतलब बैकअप के लिए नॉट बैड एट ऑल। What else, I can see, talking about Manchester United again, what about Diego Dallo versus AWB, Aaron Van Bissaka? What do you think, Man United fans or neutrals be? Whom should United keep? Aaron Van Bissaka or Diego Dallo? I think Diego Dallo रहेंगे. From what I know, they are not, displeased नहीं है उसके performances से compared to what the time Aaron Van Bissaka has had. तो Aaron Van Bissaka के लिए I think they are open to offers. हाँ, अगर Diego Dallo के लिए उनको कुछ मिलता है, something like 45 million मिल गया, तो obviously they'll sell, but they're not going to get it, right? लेकिन हाँ, Aaron Van Bissaka certainly will be going. और एक जन जो लिंक हुआ है with Man United at right back is Max Aarons. Max Aarons is going to come, by the way, people, as we are watching the match in Spain, keeping possession again. Like, Max Aarons of Norwich. I think Norwich में थे last right back में, decent. I think Norwich के one of the better players मैं बोलूँगा. What about that? मैं बोलूँगा Max Aarons to Man United. Mighty man. I can see that fitting. Well, one of the better right backs of the relegated sides, absolutely. यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं. Why am I not surprised with Morata missing? MJ. Okay, Man United fan telling to MJ, I can totally understand. Ankit bhai, your favorite Spanish player of all time? Yeah, interesting. बहुत ऐसा question है. I'll tell you honestly, मैं बोलूँ, मतलब maybe थोड़ा old school हो again, but हाँ, they might not be the best players. ये disclaimer मैं पहले दे रहा हूँ. They might not be the best players. लेकिन my favorite, so it's about my favorite, right? So of all time, अच्छा, ये काफी interesting. मतलब I was about to say Juan Mata. हाँ, you might be surprised. Juan Mata in his prime मैंने देखा है भाई, मतलब he was not used at all as much as he should have. मैं बोलूँगा even Cesc Fabregas wasn't used as much as what he should have in the Spain national team. Obviously, लेकिन Xavi, Iniesta, brilliant level. मतलब I'm not telling, they are obviously far better players overall, right? लेकिन just as a overall player, एक package, with leadership and everything, मैं बोलूँगा Carlos Puyol. You heard it there. Morata coming off, as I said, Carlos Puyol's name. लेकिन हाँ, Raul D. Thomas coming on, that's surprising for me. लेकिन हाँ, maybe just giving a chance. Very interested in Money Mace, Man United. Okay. Let them be interested, okay? Let them be interested. We are also interested in getting Ronaldo and Messi. मिलेगा नहीं हमें. Not comparing, but you know what I mean. Again, big up to Man United and Eric Ten Hag. Following Dutch football, I know that this guy is very ambitious. लेकिन भाई मेसन माउंट तो नहीं आने वाले, क्लियर सी बात है, एब्सोल्युटली। पॉल पॉगबा, legend says Pogba was a ping pong ball in other universe. भाई आज 3 मैच थे मेरे, अडामा ट्रेयर इन द हाउस, ओके, अच्छी टीम थी, फिर भी सारे हार गया, कांट बिलीव, बहुत नर्वस हूँ। अरे कोई नहीं यार, होता है, इट हैपेंस। अदवे, I look out to clip Ankit whenever I feel agitated.
Nice, nice. Well, feel free to, man. As in, again, the fact that someone is even wanting to clip me is an honor. It's Spain's match to lose. Yeah, absolutely. Chelsea are really slow in transfer. So I checked Twitter a lot of times. It are no news. Or be news. He actually. So what about basically? Okay, not talking about Chelsea here. Talking about Arsenal, Chelsea's neighbors and Chelsea's rivals. Alexander Lacazette. Talk about Paul Pogba going back. सपोजिटली वो भी जाने वाले वापस से, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, इतने लोग फ्री में जा रहे हैं, इट्स फ्री ट्रांसफर विंडो दिस टाइम, इतने लोग, लाकाजेट गोइंग बैक टू लियोन फ्रॉम रिपोर्ट्स, मतलब आई नो लाकाजेट ने हगा यार काफी, भाई वे लोरेंटे गेट्स येलो कार्ड, लेकिन भाई व्हाई वुड यू एक्चुअली लेट लाकाजेट गो, स्पेशली आपने जब साइन नहीं किया प्रॉपर स्ट्राइकर, इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग मेरे लिए, आई नो मतलब ही इज नॉट अ स्टार्टर फॉर एवरी गेम, राफेल लियो कमिंग ऑफ, ये क्या हो रहा है भाई, ये फ्रेंडली है क्या सच में, सच में मतलब व्हाट इज दैट यार, व्हाट इज सैंटोस डूइंग, हाँ ही इज नॉट फिनिश्ड वेल दिस गेम, आई अंडरस्टैंड, बट मैन ही इज योर मेन क्रिएटर, इज ही एन इंजरी और व्हाट, आई नो दे हैव टू प्ले 4 मैचेस इन द नेक्स्ट वीक, फिर भी भाई मतलब अगेन तो होगा भाई, लाकाजेट टू लियोन होगा, मैं तो बोलता हूँ माइटी, कोई नहीं, ईयर ओनली, अरे भैया आराम से विंडो और 3 महीने खुला है, वी कैन ऑलवेज डू सम ट्रांसफर, नहीं दैट इज द पॉइंट ना अद्वै, वी नीड पीपल अर्ली, आप देखो 2015 में जब फैब्रिगास और कॉस्टा आए थे, अर्ली विद आई थिंक रेमी केम, देन ड्रॉगबा केम, इफ आई रिमेंबर राइट, they were quite early, all of them. Yeah, absolutely. Say about Spurs transfer market. Yeah, Spurs fans, man, what do you think? Why are you still going for Kostic? I understand, man, that you are ambitious, आपको चाहिए, लेकिन थोड़ा वियर्ड नहीं है, तो सर्जियो रेगुलॉन को आप जाने दोगे, मतलब थोड़ा वियर्ड है यार, आई नो सर्जियो रेगुलॉन का मे बी ही हैड सम इश्यूज विद कॉन्टे और व्हाट नॉट, बट द गाय इज एक्चुअली अ गुड प्लेयर, पेरिसिच brilliant signing on a free, but Perisic again, will he be able to play 38 league games in that league, a new league for him? मुझे नहीं लगता he'll be able to play almost 30, yes, maybe for the rest games I think, again, some games I think the Regulon will sub him where they want to defend a little bit more than what Perisic starts will give him, लेकिन Kostic super player, why would you go for him as well, ये थोड़ा सा surprising है, talking about Spurs, right? लेकिन again moving on, Ankit Bhavan, Kante's future, he'll stay, man. He is our, like Tuchel ने बोला था, he is our Salah, our De Bruyne, our Haaland, our whatnot. उसने बोल दिया. Do Chelsea need a backup CDM? Chelsea don't have a CDM. Chelsea don't have a CDM. Kante is not a CDM. Kante is basically at best a box to box. अरे wide. Sarabia is having a decent game. लेकिन हाँ, he is basically more of a number 8 plus a number 6. You know what I mean? Who cannot score much, who is brilliant when it comes to breaking play. He is a destroyer. CDM is someone who actually naturally defends. He is not one of them. तो मैं बोलूंगा we need someone like a Declan Rice mold का player. That's simply put. Even better if we can get someone like a Rodri kind of mold player. Brilliant. That is what we want. कोई है available बोलिए मुझे, सात्विक, Bissouma, NDD, those are closest shouts in the Premier League. Ankit, we are feeling unwell today, going to rest now. कोई नहीं, no problem. Ayush, thanks for joining, of course. Big up to Ayush. कोई नहीं, absolutely always good. 2015 was the worst season. Why? 2016 was that. I think probably I'm confused. Okay, 2015-16 is not what I mean. 2014-15 is what I pointed out. When I say 2015 season is the league winning season of 2015. यहाँ पर रोनाल्डो भाई साहब एस्पिलिक्वेटा का गर्दन मरोड़ते हुए. What was that? I don't think a CR7 needs to do that. Come on. You don't need to do that. I know he's a goat, but come on, man. Aspilicueta, or maybe he overacted. I don't know. A bit of both. Talking about Argentine doing magic at Wembley, I agree. Di Maria was great, absolute magician. 100%. मैं बोलूंगा Di Maria is highly underrated in the Argentine team. Without Di Maria, they cannot function this way. और मैं seriously बोल रहा हूँ. And that doesn't mean I mean Messi is not functioning. Before people quote me again, I mean Messi and Di Maria obviously. लेकिन डी मरिया इज ऑल्सो अ मस्ट. अंकित, वॉच आउट कॉन्टेंट स्पर्स, या एब्सोल्युटली, समझ रहे हो ना, एब्सोल्युटली. हमें इतना बेसिकली हमने किया है इतना टू स्पर्स इन द लास्ट 1 year that they will remember the aggregators far too much.
Uh, oh, Lou Manu. Okay, so basically, the 4-0 जो किया था under Mourinho, under for Chelsea. That is what you are adding as well. I'm guessing. कोई नहीं. Ankit bhai, what do you think about City's pressing? And I remember Lou Manu, like just talking about that. Maybe the game that we are referring to is where he told the crowd to come on, and Mourinho was like, "You don't do when you're actually winning the game like this." Okay, so anyway, Ankit bhai, what do you think about City's pressing? They prefer really high and leave no space in the end. अरे नाइस सेट पीस यहाँ पर पोर्चुगल का, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ. तो देखो यार, ऑनेस्टली सिटी इतनी फ्लेक्सिबल टीम है ना, तो आई डोंट थिंक दे हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ प्रेसिंग. आई थिंक इतना टैलेंट है उनकी टीम में, तो आई डोंट थिंक दे स्टिक टू रियली वन. इतना फ्लेक्सिबल है देयर मैनेजर एज वेल. So that is why I kind of respect Pep Guardiola, because he really is flexible in this day and age. Every day he is flexible. Or you cannot read their, you can say on paper एक चीज, लेकिन their way is basically they have got different ways of playing. अब देखो रूबिन डियास नहीं है इस मैच में. He brought a lot of kind of calmness to the defense. और up front you have players like Bernardo Silva जो midfield में भी खेल सकते हैं, जो up front भी खेल सकते हैं, same with De Bruyne, same with Foden. So that gives them a lot of flexibility. So if they want, they can press in moments, and then they can probably keep possession as well. Same goes for the defense. They are ball playing as well. Same goes for the goalkeeper. हमें पता है Edison. It starts right from there, and one ball भी कभी-कभी करते हैं Edison. The brilliant passer as well. I agree, City plays very hard. Apparently, UEFA was highly satisfied with them. Ankit, please, Chalade was better at Wembley last night. Messi or Di Maria, please choose one. This is where Lumani is wanting to clip me, but anyway, people have got me, and मैंने already बता दिया Lumani that I have told that last match when I did the watch along, I have told that Messi is the man of the match. I have told that already, but I have also said that Di Maria is very close to being the man of the match. So I think it was really difficult for me to choose one, and that's why मैंने बोला है Messi, because of the fact that Messi was the guy who started off that move, started off that first goal. इसलिए मैंने Messi को दिया man of the match. He's not a beast. Let's get it right. He's not a beast. He is brilliant, लेकिन he's not a beast. I think Chelsea fans ने उसको hype किया था, मैं included. मैं पूरा okay, check out our Euros का, मतलब again मैं खुद नहीं बोलूंगा, लेकिन lot of people who watch our content, right, they told me that I think two of the playlists जो सबसे best लगता है on Almighty Blues FC that they like. One is obviously Who Am I, जो वापस आने वाला है. Yes, promise करता हूँ next week आएगा. Who Am I जो आने वाला है trivia that people really love. The second one is my international football content. आप देखिए वहां पर मैंने यूरोज पूरा कवर किया था, उसमें मैंने हर एक मैच का किया था. जस्ट मैंने नहीं, काफी फेलो फैंस थे. फतेह वाज नाउ yesterday, he was there in a few streams. So we did a lot of discussion about Christensen, और मैंने ही काफी लोगों को हाइप कर दिया था और ये ट्रेंड करवा दिया था along with a few other Chelsea fans that he is the Danish Maldini. Trust me, he is not a beast. He is very good. He's sound. That's all at best. Satvik, again, honestly, in Denmark, probably the way Denmark play suits him. Chelsea में क्या होता है ना, people know that we are vulnerable when it comes to set pieces. We are vulnerable when it comes to crosses, और वो उसका गेम नहीं है. Denmark में maybe they're not sussed him. That's all. They don't play Denmark every week. They play Chelsea every week, right? That's the only difference. ये क्या भाई? Chelsea beat Spurs 2 times in Premier League with 2-0 in each game. Yes, and also beat them in FA Carabao. Yes. Okay, चलो 8-0. मैं वही पहला मेरा guess वही था, Lumani. That's probably the aggregate जो आप कर रहे हो. लेकिन then I realized with your name, I thought maybe there's a Man United factor also. Lumani, I'm assuming you are a Man United fan. As in, that's what I'm assuming. But again, so I remember that 4-0 game was it where Kante scored, और जहाँ पर Conte did this. So मैं सोचा वहाँ भी some kind of revenge you're talking about from that perspective, being a Man United fan. I mean, what is the difference between City's pressing and other team? No team presses like them. नहीं, not really, man. Liverpool काफी press करती है. I don't see that kind of difference in terms of quality. Yes, of course they have much more, but again Liverpool भी काफी press करती है. Again, if you notice, Chelsea भी मैं बोलूँगा certain performances like what Tuchel expects. लैम्पार्ड का मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, FA Cup semi-final game आप याद करिए. For people, Man United fans again might remember, it was FA Cup semi-final game against Man United, Chelsea and Man United. Chelsea, I think if I remember right, went 3 at the back. Again, that was example of pressing football. That was superb pressing. Oh, Gavi is coming off, man.
तालियां यार सबके लिए. Gavi OP यार in the chat, man. What a performance, man. I have to say that first goal, crucial goal, and Gavi, definitely, man. 17-year-old kid, he's literally a kid, comes off worth it. He deserves ovation. And Bruno Fernandes, as many people call, coming off in 80th minute. भाई साहब अभी भी डियोगो जोटा is not on. What is happening? क्या डियोगो जोटा क्या इंजर्ड है क्या? पोर्चुगल क्या ट्राई कर रहे हो आप लोग? Fernando Santos is probably experimenting before the World Cup, is it? Kind of strange. Strange, man. Denmark has Mark in its name. Obviously, defenders will do well. Oh, man. Good one, good one. One United, one Man United 11. Okay, fair enough, fair enough. लेकिन हाँ, coming back to transfers again, कुछ और थोड़ा न्यूज. अरे गोल हो गया भाई. I have to put my hand up. I questioned Fernando Santos substitution, but substitution he काम किया. Absolutely, man. What an unexpected goal against the run of play almost. Oh my God. Portugal score, and I called it that नहीं Rafael Leao को नहीं लाना चाहिए था वापस. Bruno Fernandes probably should have been kept on if not for Diogo Jota. लेकिन भाई अच्छा क्रॉस यहाँ से राइट विंग, आई थिंक कैंसेलो ने क्रॉस किया, बहुत ही बढ़िया. एंड अ गोल, अ क्लियर गोल. इज इट गेडेस किसने मारा है गोल? चेक करते हैं जल्दी से. लेकिन काफी अच्छा गोल है, काफी अच्छा गोल यार. आई हैव टू से brilliant. I think brilliant play. I have to definitely give it to Cancelo as well. Ricardo Horta, the guy who just came on 7 minutes earlier for Rafael Leao, उसने किया है. रिकार्डो होटा ने बहुत ही अच्छा गोल है. फॉर मी ब्रागा के प्लेयर है, और इनका भी काफी अच्छा सीजन किया है. तो fair enough, absolutely. Well, England aren't producing 17-year-olds anymore. By the way, it's 1-1. Who had commented 1-1 भाई? और नेशंस लीग में 1-1 हो सकता है बिकॉज इट इज ग्रुप स्टेजेस अभी भी. रिकार्डो होटा विद द गोल, एंड वहां पर गावी सब्स्टिट्यूट होते ही दे काइंड ऑफ कंसीड. इज इट अ कोइंसिडेंस? आई डोंट नो. Rooney was the last one. I think I would like to kind of disagree there. There are a lot of players. Problem ये है ना कि the system of England are depending a lot more on the under 21s. England Lions जो call करते हैं ना, they are wanting to blood them a little bit more. हाँ, no one has come out like breakthrough proper हुआ है, very young. लेकिन won't you say that Reece James came in really early, Trent came really early, Phil Foden came really early as well. हाँ, not 17, but I think if I'm not wrong, they all entered almost at 19. Rashford, they all entered at around 19. Correct me if I'm wrong. Almost 20, I would say. I think that's also very young. Yeah, when they started off, getting their first cap for England, or when they were in talks. So I think all these guys, hats off to them. Be it Trent, be it Reece James, be it your Phil Foden, be it Rashford, they were definitely supposed to be them. Like, nothing like a Rooney. You don't get a Rooney every generation, man. He is a generational player. Come on, let's be honest about it. Your top 4 teams. मतलब प्रीमियर लीग का बात कर रहे हो कि किसका बात कर रहे हो सात्विक? If you can just okay, वर्ल्ड कप. यार मैं ना अभी पूरा दे नहीं पाऊंगा. आई वुड लाइक टू सी नेशंस लीग. मैंने अर्ली प्रेडिक्शंस तो कर लिया है एक्चुअली, और मेरे अर्ली प्रेडिक्शंस मैंने एक वीडियो में भी किया था, आप लोग देखिए. मैं यहाँ पर चलो मैं आई विल ट्राई एंड शेयर द स्क्रीन अगेन. आप लोग यू माइट कोट मी, यू माइट क्लिप मी, लेकिन वो मेरा प्रेडिक्शन है. इट्स नॉट लाइक आई वांट देम और समथिंग. मेरा जस्ट प्रेडिक्शन है, और ये गट फीलिंग थी ना. ये प्रेडिक्शन अभी की नहीं है, ये प्रेडिक्शन थी जब वर्ल्ड कप ड्रॉ हुआ था 2.5 महीने पहले. ठीक है, तो मैं अभी शेयर करना चाहूंगा. ये शेयर ही कर देता है एक्चुअली. कहाँ पर है भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ. हाँ चलो, ये मैं शेयर ही कर देता हूँ बिफोर एनीवन काइंड ऑफ पुट्स अ क्वेश्चन मोर. लेकिन हाँ, दिस इज एन अर्ली प्रेडिक्शन. आई विल गिव यू थोड़ा सा डिस्क्लेमर. अर्ली प्रेडिक्शन है, इट कैन चेंज, और मैं सबको भी बोलूंगा यू कैन चेंज योर प्रेडिक्शन अंटिल से द वर्ल्ड कप इज वेरी नियर, अंटिल स्क्वाड सेलेक्ट हो जाते हैं. लेकिन अभी यार फॉर्म फिटनेस बहुत देखना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. चलो यहाँ पर कहाँ गया ये रहा. I don't know if you guys can see it. हाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा. तो देखो, दिस इज व्हाट माय वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन वाज, और मैंने काफी हेट लिया था इस प्रेडिक्शन के लिए. मुझे याद है
It is just a prediction which was done 2.5 months ago. I have to give disclaimer time and again. It was just based on my gut at the time of the draw. ठीक है. Now it depends on a lot. जो selection होगी, जो team form होगी, जो fitness होगी for the next 5 months. तो अभी 5 महीने बाकी है भाई, मतलब काफी 5.5 महीने बाकी है, तो काफी टाइम है अभी. तो वापस से करने वाले towards the end of the summer after the Nations League, 4 match days में वापस से करने वाला हूँ. I'll release another video. Hopefully we'll do a live as well. We'll try and go through every group in detail. लेकिन this is what my World Cup prediction early was. और भाई nice save और point blank miss. यहाँ पर Diego Costa has done well with that save, but rebound हुआ और almost you can say point blank miss by Spain यार. जॉर्डी आल्बा. तो हाँ, you can see यार, मतलब ये disclaimer है. It was early prediction again. I'll be changing this prediction based on the form and based on my gut after the Nations League 4 match days. देख लो, Germany, Brazil in knockouts, and I say okay, winning World Cup, I say Germany. Okay, interesting. What would you have to say? What do you want? A hen to be scared. Henderson. Oh my God, अदवे. क्या ही तो बोलूं मैं. लेकिन हाँ, एवरीवन यार, लेट्स लाइक द स्ट्रीम. कितने लाइक्स हुए यार, मतलब मैं काफी देर हो गए, मैं लाइक्स के लिए आजकल पूछ नहीं रहा हूँ. लेकिन हाँ, आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर डेफिनेटली लाइकिंग द स्ट्रीम एज एंड व्हेन यू आर कमिंग ऑन. कम ऑन यार, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. 75 लाइक्स भी नहीं हुए. आई कांट बिलीव इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट हाँ, वी हैव ओनली 163 वोट्स, व्हिच इज आल्सो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग यार. अगर अगेन वी आर हैविंग लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द गेम, अगर किसी ने नहीं शेयर किया है, किसी ने नहीं लाइक किया है ऑन माय पोस्ट, I have put a community post on Almighty Sports Plus. I have put a post on Instagram on Almighty Blues FC. Do give me a follow there. Do follow me on Twitter on Almighty Blues FC. Means a lot. अगर आप retweet कर सको, like कर सको on the community post and on social media, nothing like it. So that just ज्यादा लोग हैं और like कर दीजिए stream. और यहाँ पर भाई साहब वापस से स्पेन का अटैक होने वाला था, लेकिन I think just about Diego डालो रख रहे भाई पोर्चुगल को टीम मैच में. तो यस यार, लाइक्स नहीं बढ़ रहे यार, लाइक्स बढ़ा दो. कोई नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए. जस्ट लाइक द स्ट्रीम, डजंट टेक अ बक. प्लीज डू इट, मींस अ लॉट टू मी, राइट. लेकिन हाँ भाई, व्हाई एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, व्हाई हेट एवरीवन हैज. यस, बाय द वे, माय प्रेडिक्शन, नेमार लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप. इंटरेस्टिंग. आई एम गोइंग विद स्पेन, इंग्लैंड, ब्राजील, डेनमार्क. स्पेन का ना ओनली मेरा क्वेश्चन मार्क है इन द फिनिशिंग यार. मतलब आज भी मतलब गावी, पेड्री अगर आ जाते हैं वापस, दैट विल बी ब्रिलियंट फॉर स्पेन, ठीक है. लेकिन do they have a proper number 9? I think they might need to play Gerard Moreno as much as Sarabia अच्छा किया इस मैच में. स्पेन को एक और मिला फ्री किक, बाय द वे. टॉकिंग अबाउट, जितना मैं गाली दे रहा हूँ उतना अच्छा कर रही है. लेकिन यार कोई नहीं. अदवे ऑलवेज लाइक्स टू जोक ब्रो, डोंट वरी अबाउट इट. ही इज अ नाइस गाय. मिरोस्लाव क्लोजा रिटर्निंग बैक टू क्लोज Germany's chances. He's a legend, bro. He's a legend. You know what? But I'm sure you're just joking there. लेकिन यार अगेन स्पेन की टीम ने को हमने देखा था शुरू में, राइट. एज इन अगेन मार्को असेंसियो नॉट कन्विंसिंग, फाटी नॉट कन्विंसिंग इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, सराबिया नॉट कन्विंसिंग इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, मोराटा नॉट कन्विंसिंग इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग. दैट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर स्पेन मेरे ख्याल से. डानी आल्मो, maybe they should play him, maybe they should play him on one of the wings. मैं तो बोलता हूँ he didn't have a great season comparatively, लेकिन फिर भी I think Dani Almo is far better than the other finishers. I still feel that Dani Almo might just come in. Gerard Moreno might just come in. ये लोग मेरे ख्याल से स्पेन के लिए होंगे तो बेटर रहेगा. I really feel that Morata alone cannot do it. Oyarzabal, he's a great shout as well. लेकिन what about अच्छा, मैंने फ्रांस का टीम खोल दिया गलती से. I was trying to see Portugal's squad as well. तो पोर्चुगल का स्क्वाड देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसको मैंने प्रेडिक्ट किया है, अर्ली प्रेडिक्शन कि यार वो वर्ल्ड कप जीत सकती है फॉर द चेंज, फर्स्ट टाइम एवर. यस, तो मैंने अर्ली प्रेडिक्शन किया है. मैं चेंज कर सकता हूँ प्रेडिक्शन, इवन पीपल कैन चेंज टिल अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन हाँ, ये है मैं अभी शेयर करने वाला हूँ पोर्चुगल नेशनल टीम, ठीक है. तो आप देखिए पोर्चुगल की कितनी तगड़ी टीम है. मैं क्यों बोलते जाऊँ कि पोर्चुगल की इतनी तगड़ी स्क्वाड है. आप देखो भाई, चेक आउट द क्लब दैट दे प्ले फॉर. You just check out the clubs that they play for. All are basically clubs who are at least competing for the title, or basically are among the top. आप देखो, हाँ, maybe the Wolves players exceptions है, but apart from that, आप देखो they would have won one cup recently, or they're challenging at least. और recent call-ups भी देखो आप. You see Sergio Oliveira, he's one of them, absolutely.
ठीक है, who I believe that Roma के लिए he should have played more. Renato Sanchez, if he's fit, I think he's playing, ठीक है. For Portugal काफी अच्छा की है. João Felix, brilliant player again, brilliant player. He has to play. He has to be. मतलब João Felix रहेंगे in the final, not in 11 but maybe in the squad. He will be there, I feel. World Cup के लिए Sergio Oliveira भी arguably will be there. Renato Sanchez will be there. Ruben Dias will be there. Jose Font arguably might be there. They have a lot of options. Ricardo Pereira of Leicester City, मतलब he's coming back from injury. तो काफी players है भाई, मतलब Jose Sa, you can argue that he deserved a place in the squad in the goal, but again Rui Patricio and Diego Costa भी are not two bad options. Nice, Jordi Alba को मिला और यहाँ पर नहीं डिफेंड कर दिया. आई थिंक Danilo Pereira ने अच्छा through ball था to Jordi Alba. Jordi Alba made a good run, but Danilo Pereira with a nice run as well and gets fouled. Very important foul by Busquets. Very important foul. So with this squad, that's why I have predicted here Portugal की काफी तगड़ी स्क्वाड है. मैंने घर के और एक अकाउंट से और एक लाइक किया. अरे भाई, आई कांट थैंक यू इनफ अगर आपने किया है. और मुझे पता है भाई, बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया है कि मुझे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत मिल भी रहा है एब्सोल्युटली. लेकिन अगेन I always seek for more and I understand there are a lot of matches tonight, there are a lot of channels. आप लोग खुद के होते हैं, फिर भी आप लोग जो भी देख रहे हो अभी भी ये बने रहे यार. कोई लोग है बेसिकली they have been here throughout the 2 hours. I can't thank you enough. I have, मतलब सच में बोल रहा हूँ, I cannot thank you enough because मतलब अगेन मुझे करीबन हो गए ना 13 महीने. This is the 13th month, probably end of 13 months हो गए when I'm preparing any kind of content, when I'm making any kind of content. And that includes around 450 videos on both the channels put together, right? But for me, the kind of love that I've received in the last couple of months, I'm overwhelmed, and I'm really hoping that it continues. And I'm hoping it's just not for the sake of what happened in the channel, but you actually like my content. So the people who are there now, I know that you guys like my content, and that's why you're there. But again, last minute hai. Hopefully, we'll get a goal and some exciting finish. I'm just putting it out there. मैंने predict किया था 2-1 predict किया था for Portugal, just so you know. Fati doesn't make it for me. It's not about giving chances to youngsters also. Yeah, absolutely. To be honest, Fati doesn't deserve it. It's just that his talent is there, his skills are right up there. इसलिए उसको मिल रहा है. लेकिन वो ये नेशनल लीग में ट्राई नहीं करोगे तो कब करोगे before World Cup? तो fair enough. I'll give it to you, Luis Enrique there, absolutely. Oh, chance from Spain, लेकिन नहीं, वाइड हुआ भाई. दानी आल्मो के बात किया और उसने वाइड मार दिया. With all ये क्या है? 4 out of 5 Spain matches must have been draw. अरे एक और ड्रॉ. गौरव राइट, एक और ड्रॉ. सात्विक, चलो नाइस, थैंक यू. But who is your man of the match? Do not go before putting in your man of the match, people. कौन है man of the match? और like, subscribe. और by the way, हम कल भी लेंगे live. My favorite team is playing as well as France, right? लेकिन हाँ, what do you think was the main point in the game? मैं तो अभी भी बोलूँगा गावी का वो what a ball to Sarabia. But I think throughout the game, देखो तो maybe Sarabia had a more influential game. I can argue that. I can't believe it. जो वेबसाइट मैं देख रहा हूँ ना, they are giving Morata the man of the match. I'm not believing it. भाई Morata ने भी मिस किए. मतलब maybe I'm anti Morata almost in the sense, होना नहीं चाहिए मुझे subconsciously maybe, लेकिन मुझे नहीं लगता Morata is man of the match. ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं इनका जो रेटिंग्स है ना, आप देखिए कहाँ गया भाई, ये रहा. तो अब देखिए, I actually feel यार that Sarabia probably deserves it. कितना रेटिंग मिला Sarabia को? 7.8. चलो हाँ, Sarabia probably deserves it. मेरे ख्याल से Sarabia probably was the guy. और obviously Cancelo का क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट था. लियाओ अगर फिनिश करते यही 6.2 हो जाता 8.2. मैं सच में बोलता हूँ. And Guerrero has had some kind of good game plays. Jordi Alba बुरा नहीं थे. Gavi of course had a brilliant assist. लेकिन एस्पिलिक्वेटा को ज्यादा रेटिंग दी है इन्होंने. मेरे ख्याल से इतना नहीं डिजर्व करते. लियाओ का परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्पिलिक्वेटा वाज बेटर, बट हिज फिनिशिंग वाज बैड. तो इसलिए मैं दूंगा एस्पिलिक्वेटा को थोड़ा कम, लियाओ को थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन मुराटा को भी कम, टॉरेस को भी थोड़ा ज्यादा. लेकिन सराबिया शुड गेट एन 8 फॉर मी. आप बोलिए भाई. फॉर मी सराबिया गेट्स इट फॉर मी. कैंसेलो सेकंड. व्हाट अबाउट यू ऑल? लेट्स सी इफ you guys like my prediction. Of course, I was not right. As a goal upset with your predictions, Portugal can't win World Cup. Arey bhai, you know what I mean. It was just a gut at the time. My gut might change.
And by the way, I'm not a Portugal stan. I'm just putting it out there. Prediction Divas. Gavi should be the man of the match. Manav, good call. Thank you, Manav, for coming on as well. Love the offensive mindset. Even last minute, both teams were trying to score. Absolutely. और बीच में भाई इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा था? That was kind of surprising for me. But yeah, जो भी आया है लास्ट में, सब लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना to both our channels. We are live tomorrow again. Yes, थोड़ा सा बेसिक कंटेंट में थोड़ा सा इस हफ्ते का ब्रेक लिया हूँ. आई होप दैट्स ओके. लेकिन हम वॉच अलोंग में इतने सारे ट्रांसफर्स डिस्कस करें. बाय द वे, बिफोर गोइंग, दो तीन और न्यूज था, मैं क्विकली बोल देता हूँ. आई थिंक लेवरक्यूजन, बायर लेवरक्यूजन ने एक स्ट्राइकर साइन किया स्पार्टा प्राहा से, एडम लोजेक. आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है. आई थिंक इन यूरोप ही हैज प्लेड दिस सीजन, प्रीटी डिसेंट है. Does it mean that Patrick Schick is leaving? आप बोलिए, where would Patrick Schick be a good fit? Maybe Liverpool. I'm just putting it out there. ठीक है. Then Golini, remember the goalkeeper Golini, Spurs के, talking about Spurs news, कोई पूछ रहा था. After his loan spell in Atalanta, he will be leaving Spurs. Probably Atalanta ही I think खरीदने वाली गोलिनी को. एंड फ्रेजर फॉस्टर जो साउथहैम्पटन से साइन हो रहे थे, वो होने वाले हैं, टेक्निकली आने वाले हैं, सेकंड गोलकीपर फॉर स्पर्स. सो स्पर्स हैव गुड कवर फॉर लोरिस. टॉकिंग अबाउट गोलकीपर, एक और बंदा चेल्सी फैंस माइट रिमेंबर, मार्सिन बुल्का. मार्सिन बुल्का, एनीवन रिमेंबर्स? ही वाज अ टॉल गाय, वेरी वेल बिल्ट एट वेरी यंग एज. तो मार्सिन बुल्का डेफिनेटली फॉर मी गुड गोलकीपर. और पीएसजी गए थे, लेकिन पीएसजी में आई रिमेंबर एक मिस्टेक था, एंड देन ही वाज काइंड ऑफ लोन टू नीस. नीस, नॉइस, कैसे भी आप pronounce करते हो, in League A. So Nice basically are buying him for 2 million. वो एक ट्रिगर कर रहे हैं जो ऑप्शन टू बाई था. तो ग्रेट फॉर मार्सिन बल्का, ग्रेट अकेडमी गोलकीपर इन चेल्सी वाज फॉर मी. ही हैड अ ग्रेट प्रीसीजन, एक याद है मुझे. डिएगो कार्लोस हैज बीन कंफर्म्ड बाय एस्टन विला. Brilliant Aston Villa, what signings, bhai. Brilliant signings. And they are also going to keep Robin Olsen as the second goalkeeper from Roma. 3.5 million euros का ट्रिगर होने वाला है उनका बाई क्लॉज. Brilliant. और Chouameni is going to go to Real Madrid. It is for sure. Camavinga ने बोला है. Camavinga और Chouameni का I think at the time same agent था, कि same agent है और अभी भी I don't know. Plus the fact that दोनों ही French है, तो pretty sure that Camavinga और Chouameni दोस्त है और वो बात कर चुके हैं. Obviously, with Bale going as well, it is important that Real Madrid gets in one player. Very different players, I know, but still for the books, or just for the fans to be happy with Bale, Marcelo, etc. leaving. Great legends for them. Bale not as big a legend as Marcelo, but you know what I mean, right? दोनों ही बहुत important players going. Finally, Bale का end हो गया, लेकिन Chouameni coming in will be great news for Real Madrid fans. Looks like वो imminent है. Christensen और Kessie, दो players जो basically Chelsea fans will say that maybe is there a chance that Christensen वापस आ जाए? If CVC deal नहीं हुई तो can they be registering Christensen और Kessie? भाई बारसा ने बता दिया है, it's just a matter of time. उनको दिलासा दे दिया है कि आप लोग हो जाओगे रजिस्टर, आप वेट करिए. तो कैसी क्रिस्टेंसन बारसा में ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला. एंड टॉकिंग अबाउट an AC Milan, Kessie, another AC Milan legend in Gattuso. Gattuso will be the new Valencia coach. What do you people think about that? Interesting, right? Gattuso as a Valencia coach. Maybe Valencia थोड़ा dramatic matches देखने को मिलेंगे, certainly. Another management जो हुई है from yesteryear's player, this is Dirk Kuyt. Dirk Kuyt is being going to be managing in the Eredivisie with Ado Den Haag. So he is being appointed as the manager, and Luis Campos to PSG as a director हो रहा है imminent. Leonardo का time is up, so very very important news for Mbappe. Luis Campos to Mbappe rather, ऐसा बोलना चाहिए था. But another management, back to that, जॉर्ज जेसूस, कितनों को याद है? बेनफिका के मैनेजर जिन्होंने एक्चुअली मैटिच को प्लेयर बनाया था, रियली. जॉर्ज जेसूस हैज मूव्ड टू फर्नेबाशे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्किश लीग फॉर मी. फर्नेबाशे, जॉर्ज जेसूस काफी अंडररेटेड मैनेजर, जस्ट अ मैन मैनेजर दैट ही वाज ब्रिलियंट. एंड कल रात को हमने देखा था किएलिनी प्लेइंग. किएलिनी टू लॉस एंजलिस इज ऑलमोस्ट बट डन, हो गया, वो जाने वाले. टॉकिंग अबाउट अमेरिकन क्लब्स और अमेरिकन प्लेसेस, American owners for Serie A champions AC Milan has been done. Yes, official. Redbird Capital have signed an agreement with Elliott Management to take over at AC Milan. Brilliant news for AC Milan. Only moving forward, Redbird holds a stake in Fenway Sports Group. I think that is related to Liverpool in a strange sense. I think so. Correct me if I'm wrong. Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins, and
टुलूस एफसी भी इंटरेस्टिंग भाई साहब, इतना सारा न्यूज. आई होप यू गाइज लाइक इट बिकॉज the transfer market has just started. The transfer market has just started. Great news for AC Milan. अगर वो official है, we can get a lot of players. And of course, Chelsea का भी obviously earlier this week you told that it's official about getting it. Barca, I know CVC did not happen, but अभी time है in your hands. You can certainly get the players. I believe so. और obviously Real Madrid after winning the Champions League, अभी और भी पैसे आ गए होंगे, तो pretty sure आप convince कर दोगे यार 2 couple players जो आपको चाहिए. You don't need a lot of players anyway. I feel that मेरा opinion है. पर आप बोलिए भाई कौन सा ट्रांसफर जो आपको लगता है बढ़िया, और यार लाइक कर दीजिए, पोल लीजिए, बिकॉज वहां पर ट्रांसफर्स की बात हमने की है. यहाँ पर मैं कमेंट ले रहा हूँ बिफोर एंडिंग. लेट्स सी वेयर वाज आई. अरे बहुत पीछे है. चलो. Portugal and fight seem pretty much the same from. Okay, interesting. Belgium versus Netherlands would be a cracker of a game. कल कौन सा मैच है भाई? कल देखते हैं कौन सा मैच है. तो कल है एक तो है फ्रांस डेनमार्क. हाँ, बेल्जियम नेदरलैंड्स है. एब्सोल्युटली राइट. Manav is right, absolutely. वही मैं I knew Netherlands is playing. I was not sure कि Belgium के साथ है, but brilliant man. We'll try and cover that. Let's see. Sheikh just signed a contract. Why will he leave? Okay, interesting. लेकिन वही है, they've signed another striker. But आज के दिन में contract sign करना is no big deal. It's happened, man. To be honest, during COVID lockdown, distributed from then yellow cards in this match. That had another bhai. You're right, actually. A lot of yellow cards in this game. Good call, absolutely. आई डोंट नो यार, वो हाफ टाइम के इधर साइड इतने सारे टैकल्स क्यों हो रहे थे? मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सडन से गेम ऐसे गंदा हो गया था. इट्स अ नेशंस लीग ग्रुप गेम, मैन. कम ऑन, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 येलो कार्ड्स. यू आर राइट, मैन. एब्सोल्युटली ग्रेट पॉइंट बाय दानिश. You're from football always. Thank you. Football always send me. Thank you. My gut says Gattuso will be cool. Okay. Can anyone tell me who took Ronaldo's shirt? I didn't take it, that's all. But गिरी भाई आप वापस आ गए हो, आपको याद दिला रहा हूँ. आप ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पर आप नहीं हो सब्सक्राइब, और आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया, तो प्लीज दबाइए. और आप ही नहीं, सब लोग प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन on both our channels, and do not forget to like our streams on both the channels. Trust me, a lot of content is already on football primarily, but also on cricket on the other channel. Dembele to Chelsea close, according to. Okay, interesting. Yeah, मतलब definitely वही मैं बोला ना. Grimes is the person that I was also following. तो मैंने कवर किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम. बट थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन हियर. लेट जॉइन किया, लेकिन हाँ, डू प्रेस दैट लाइक. शिक कुड बी अ गुड फिट फॉर चेल्सी एंड आर्सेनल विल. फॉर चेल्सी एब्सोल्युटली. लेकिन मुझे लगता है ना, I rather have someone who's proven much more at a higher level. मतलब again, I might be wrong, but that's just my preference, क्योंकि हमारे पास already Havertz है. Already we are having people who are not, say finished element. He's not yet the finished element. We need a finished element, I feel. मतलब finished means not finished totally. मतलब at the peak, you know what I mean. Schick और भी है सीलिंग और बढ़ने के लिए. That's my personal opinion. But again, great striker. Possible new signing for Liverpool as per the source news you have heard. Okay, so शायद as per जो मैंने सुना है ना, मुझे लग रहा है, मतलब again ये मेरा gut भी है थोड़ा, और going with what I've heard, and going by even tactics of the teams ना. I know Lewandowski to Liverpool हुआ है, Darwin Núñez to Liverpool हुआ है. मुझे लगता है Darwin Núñez to Liverpool is more likely. उसको मैंने माइटी दिया है. Lewandowski to Liverpool मैंने नहीं दिया माइटी, मैंने दिया Lewandowski to Barca माइटी. The reason being that मुझे लगता है De Jong जाएगा United. They'll convince him for a 75-80 million euros का figure, rather Barca. And the fact that they are Man United, Ten Hag है, I think they will just convince and maybe stay one season and see what's the best. But I think they need the money, Barca, so they will use that money and put it to Lewandowski. Maybe at 45 million they'll buy Lewandowski. Or Darwin Núñez, also the reason being that just एक club structure, एक club DNA होता है. Darwin Núñez kind of fits that more for me. As much as Lewandowski ने खेला है, under Klopp, still I'm saying it. Plus the fact that Bobby Firmino did not have such a fantastic season. I think he was, in a strange way, I think he'll have a lot of kind of Arsenal in his tank. You know what I mean? इस सीजन के लिए तो मुझे लगता है बॉबी फर्मिनो का बेस्ट आपको मिलेगा इस सीजन में, along with Jota already है. तो I think those two can do a job. Darwin Núñez gets mentored this season, or second half of the season he comes on. Not a bad choice, ना, मतलब आप बोलिए. And apart from that, भाई, I don't see any major signings happening because you have Carvalho already coming on. तो एक midfielder already आ गए, तो I don't think you need a lot of signings. हाँ, DM एक चाहिए, I understand that. Joe Gomez probably will stay. I don't see him going. Trying to build an empire similar to, okay, City, interesting. Thanks मानव. पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं. पुलिसिक फ्री में भी आ गया, लिवरपूल को नहीं चाहिए.
मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, मतलब आई रियली बिलीव इन दैट, बिकॉज यार पुलिसिक क्यों जाएगा? आप सोचिए, पुलिसिक आई नो दैट व्हेन इन डॉर्टमुंड ही यूज्ड टू प्ले राइट विंग, लेकिन यार चेल्सी में आई थिंक हिज बेस्ट हैज बीन प्लेइंग इन लेफ्ट विंग. You have Luis Diaz, the signing of the season. Why would Pulisic go there if he wants football? I don't think so he'll go there. And Jota also, he prefers playing left अगर वो striker नहीं खेलता है, याद करिए. Gavi played better than most of Portugal players. 100% agreed. 100% agreed. Gavi and Sarabia, brilliant game, I think. Hello Ankit, hello Tanmay, always good to see you as well. Like कर दीजिए, subscribe, and yes, we'll be back tomorrow as well. Lot more content towards the weekend. हम plan कर रहे हैं, churn कर रहे हैं आप लोग के लिए. So don't get impatient. Gavi is a great talent. Aditya says and Liverpool contacting Gavi. अद्वैत बोल रहे नहीं, वो नहीं जाने वाले मेरे ख्याल से. Lukaku news update भाई अभी likely और बढ़ गया है. He might go to Inter. But मेरा वही है यार, he will go only if Chelsea are getting a good replacement who's a finished article, who is basically ready. That Darwin Núñez isn't at this point in time. ठीक है, so that is the only reason I see that Lautaro Martinez तो नहीं आने वाले, not a fit for me in our system. I would say that Lukaku should stay. Lukaku रहेगा, मेरा गट ये अभी बोल रहा है एक सीजन और एटलीस्ट 6 महीना और रहेगा. Let's put that way. Why don't Chelsea go for Longley as released by Barca? Seriously. Again, nothing against him, but we don't want him. Why can't Chelsea go for Jesus? Not a fit again. Great player, but again, we want a proper number 9 who can command the box, who can score goals. Gabriel Jesus, as much as is brilliant, I don't think he is a proper number 9 going by last season's form or the way he was played. But we also need a good, winger or a wide forward. He's not a bad option, but he's not directly taking players on. We need that kind of a player, a natural Brazilian player, maybe like a Vinicius. I'm not saying that Vinicius is coming, but that's the player. That's the level of player I want. That's the kind of player I want. Both combination. Liverpool go for Puj. Okay, Gavi को देखना भी मत. No way. Imagine Pep Guardiola managing the Spain side. It'll be like passing and only passing. Imagine Jurgen Klopp managing the Spain side. क्या different हो जाएगा ना? Spain need a better striker. Morata ज़्यादा goal miss करता है. हाँ, मतलब exactly this is a problem of football. Generally football की problem है कि यार we don't have so many great finishes in the game anymore. Like there used to be time. मुझे याद है भाई, डेल पियरो, इंजागी, रोबर्टो बाजियो, टॉटी, इतने सारे kind of camps or forwards थे वो like kind of I felt that they were better finishers. मतलब at the same time, in a strange way in Italy and even in England, like we had Manchester United में एक साथ 4 बढ़िया strikers थे भाई. Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham, and Andy Cole, and Ruud van Nistelrooy came on then. That they had a lot of strikers at the time. Even Liverpool had, obviously, with their legends. And then they had a lot of good strikers, and we had Chelsea में थे यार finishers natural साथ में. Jimmy Floyd Hasselbank, you had Ida Goodjohnson, then Crespo and Drogba came on. I don't know, man. Liverpool to pay 42 million release clause of Lava. Okay, interesting. I personally doubt it. I really doubt it, man. Maybe, just maybe, agar Frenkie de Jong does not leave Barca, maybe they might cash in on Gavi, but really wrong hoga, really wrong. But I can't see it happening. That's what I'm saying. My gut. Hazard, Thibaut Courtois, or Rudiger. So Real Madrid in the second team, which is yours, and please guess starting lineup of Chelsea. Okay. तो ये भाई सांकेत हमने एक प्रॉपर स्ट्रीम किया था बोलीज प्लान्स फॉर द न्यू एरा. तो आप स्ट्रीम देखिए, उसमें मैंने शेयर भी किया काफी क्योंकि दिस वाज मोर ऑफ अ वॉच अलोंग प्लस ट्रांसफर टॉक. तो यहाँ पर हमने नहीं किया, but again we'll be continuing for the next couple of minutes as well. The fact is, I wanted to talk about this Rudiger to Real Madrid, RR. Basically, absolutely fantastic. I know Rudiger ने share किया है on social media. Hats off to the guy. Great signing for Real Madrid. लेकिन again, I have my question marks on him playing in 4 at the back at the level जो खेल रहा था for Chelsea. He's a fantastic player. Don't get me wrong. लेकिन वही है, that's a slight doubt वहाँ पर. Having said that, I think he's a huge miss. He cannot be replaced at Chelsea. Directly मैं बोलता हूँ, he cannot be replaced. He was so good both on and off the pitch. He was a character. Anyone जो आप देखते थे Chelsea TV, if you were really following the Chelsea players, this guy was a specimen. You remember? That's what he did, right? मैंने किया था एक्सट्रीम, मुझे याद है उसके बारे में, and we डिटेल में डिस्कस थे. April Fool's Day था उस दिन, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था उसके बारे में. You remember? Check out my stream on April Fool's Day. मैंने लाइव स्ट्रीम किया था उसके बारे में डिटेल में when those real imminent talks started to Real Madrid. लेकिन वही है, मतलब hats off to him, all the best.
He'll be missed at Chelsea. I don't think we can replace him. Pau Torres is what I want. He was good today again, but again, he cannot even replace Rudiger, man. No one can. Different kettle of fish, different gravy. Could Liverpool promote Tyler Morton a bit more this season? Also interesting to see Harvey Elliott and Curtis Jones. मैंने तो बोला है भाई, Harvey Elliott will get a lot more minutes this season. You take it for granted क्योंकि Liverpool are unlike a lot of other clubs. They do good succession planning. I have seen that under Klopp especially. So Salah's minutes will be managed. Harvey Elliott will play wide as well. You see, wait and watch. Who do you think will be a perfect right winger for Real Madrid for this squad? Jabbar, I think Valverde is perfect. The fact that Vinicius or Benzema almost play like two strikers up front at times, I think Valverde is perfect. I really genuinely believe that. Big games के लिए Valverde or not so big games के लिए you have Rodrigo. हाँ, the problem is अगर वो injured हो जाते हैं तो you don't have one of a same kind as a backup क्योंकि Asensio आपके जाने वाले लग रहा है इसी मिलान देखते हैं वो लेकिन that is why you might एक था डिबाला को they could have tried absolutely till the time he settles in La Liga and next calendar year में he would have been brilliant लेकिन looks like वो इटली रहने वाले तो I don't think he's going to move he's told that he likes the Premier League in La Liga लेकिन it's more like he loves Italy वो clearly बोले just like Nkunku ने बोल दिया about PSG तो I don't think एक obvious choice है हाँ Gnabry is the guy जो likely लग रहा है but is it really needed Gnabry will start yes of course but I don't know man मतलब I rather I thought that Asensio को ज़्यादा time भी देंगे he can be your left footer who would cut back just like a Di Maria करते just like Robin करते थे लेकिन I don't know for Real Madrid fans I believe that it has worked well so why not continue the same but yeah Gnabry will not be a bad one at all absolutely he likely लग रहा है जापान yeah absolutely लेवा के क्लॉप के अंदर काफी अच्छा किए थे Nunes is most likely absolutely I agree with you 100% Dani Almo भी अच्छा player है yes I think मतलब स्पेन के लिए गिरी भाई like I think Dani Almo should play a little bit more I genuinely feel that they don't have a natural kind of a natural creator because I'm telling the front three मतलब midfield में तो they have only creators and creators but वही है वहां पर भी कुछ चाहिए क्योंकि Ansu Fati I don't think is going to be there in the squad that's just my feeling Ferran Torres is brilliant लेकिन वो ये Dani Almo kind of brings something more so he might come on in most matches as a sub what are the reason of that De Gea missing today's game and can he play next game David De Gea wasn't in the squad bro he wasn't in the squad they had picked Brentford का goalkeeper and मैंने दिखाया था squad भी I think David Raya is the name Robert Sanchez of Brighton is also there and of course Unai Simon is there so they can only pick 3 and I believe Unai Simon overall game is what Luis Enrique likes more fair enough to him but I would have preferred De Gea if you ask me Casemiro and Rudiger are two of the most irritating players for an opposition and दोनों ही साथ में यार imagine yeah if you're the teammate you love them if you're the opponent you hate them absolutely next season I feel Milner will get less game time by the way hats off to Milner by the way he got I think awarded by the Queen along with Gareth Bale so hats off to those guys man but again यार करीबन कितना 2.5 घंटे होने वाले I hope you all have liked the stream generally you like the match 1-1 yet another draw 4 consecutive draws between Spain and Portugal talk about draws Spain by the way are kind of unbeaten in the last 5 so you have to go to Spain definitely Asensio is not good enough he should be sold हाँ वही है if Asensio अपना quality or consistency better करते तो he would have stayed but you probably need that kind of a player you know what I mean that's what I actually wanted to say but he's unfortunately not lived up to the expectations of growth last year Premier League में पता चला Phil Foden 21 years age has 2 years old daughter oh interesting और उसने भी कुछ कांड किया था imagine फिर भी बीच में स्पेन के पास एक एडिसन जैसा बॉल प्लेइंग गोलकीपर होना चाहिए उनके एक्चुअली केपा इज अंडररेटेड लाइक अगेन आप हंसोगे बहुत लोग यार केपा इज बेसिकली अ चेल्सी गोलकीपर मैंने काफी क्लोजली देखा है ही इज केपेबल ही इज रियली केपेबल लेकिन प्रॉब्लम यही है ना लॉन्ग शॉट्स और शॉर्ट स्टॉपिंग जनरल ही इज नॉट एज गुड एनीमोर so that's the main problem with Kepa तो ओवरऑल बैलेंस देख के Unai Simon is what is the pick मतलब अगेन पोर्चुगल के लिए भी you can argue that Diogo Costa यार come on Diogo Costa probably should not be there पोर्टो के लिए क्या ही तो कर लिया था लेकिन भाई दिखा आज Diogo Costa ने अच्छा किया है he kept Portugal in the game trust me he did ठीक है तो Portugal scoring that goal later on of course by Horta
इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बट बिफोर दैट डिएगो कोस्टा को देना पड़ेगा. तो एज मच एज ऐसे कि गावी और सराबिया मैन ऑफ द मैच थे, अगेन मैं बोलूंगा डिएगो कोस्टा बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स किया आज. जोसे सा अगेन फॉर पोर्चुगल शुड बी इन द स्क्वाड, लेकिन नहीं है. ही रादर पिक्स आई थिंक बेटिस के गोलकीपर, रोमा के गोलकीपर, ऑब्वियसली द लेजेंड रूई पैट्रिशियो फॉर पोर्चुगल, और डिएगो कोस्टा जो स्टार्ट करते फ्रॉम पोर्टो. That's again यार मैनेजर की चॉइस है. Santos, I don't know what he's thinking to be honest, but he's not bad. Again, Costa is good. Okay, if Chelsea sign Busuma, do you see them switching? Given him 100%, not switching. Okay, we will try and implement it. Let's put it that way, because Tuchel 4-3-3 खेलते थे in the past teams, so I can see him. Even this side, आपको याद है मानव against Spurs हमने अच्छा भी किया था 4-3-3, where I think this guy Ziyech, one of my favorite in Chelsea, he had his best game. Why not? एक गेम में I remember Kante also played in the 4-3-3. He wasn't too bad either. तो मेरे ख्याल से we have a lot of personnel who can play in 4-3-3. Problem is our defense. Our defense is brittle अभी इतने लोग छोड़ने के बाद. So that will be interesting whether we are able to. And defensive midfield is needed absolutely, like you said. Kepa will get a chance in World Cup अगर De Gea कुछ कांड करेगा किसी मैच में. But De Gea is the only goalkeeper who can save Titanic. मैंने आपको रियल सेंड किया ही चैंपियन लीग फाइनल का गोल ऑफसाइड था. क्या समझा यार मैंने आपको रियल सेंड किया ही चैंपियन लीग फाइनल. आई एम नॉट श्योर इफ आई गेट इट. अमी इफ यू कैन जस्ट रीवर्ड दैट प्लीज. डेविड डिया अगर बॉल प्लेइंग एरिक टेन हाग के अंडर सुधर लिया तो खतरनाक. लेकिन ओके, can he get that? Like the same thing was told about Petr Cech. Petr Cech was brilliant. Petr Cech is arguably the best Premier League goalkeeper ever. Arguably, ठीक है, Premier League goal era में. But आपने देखा था आर्सेनल में क्या हुआ पेटर चेक के साथ. तो आई थिंक देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो don't suit the team. So that is what I think Eric Ten Hag with David De Gea is. But again, time will tell. यार, I will still say that Man United should keep him. हाँ, they may not make him the captain for that reason, I believe. No problem. Even I am going to end because it's 2:30 बज गए हैं यहाँ पर. और let's like the stream. Let's get up the likes, hopefully to 200 likes. To be honest with you, I feel 4 hottest teams as favorites to win World Cup: Argentina, France, Brazil, and Portugal. भाई Netherlands भी डाल देते हैं, लेकिन I know they're not as strong. अच्छा, रील सेंड किया. Okay, no problem. I'll take a look, bro. मतलब वही है, मतलब kind of very busy season, तो kind of managing things अभी, लेकिन hopefully I'll try and reply to you as soon as I can. Kounde was brilliant playing the box to box in 4-3-3 in the Mauritius Sarri system. Also, I feel Kovacic could be used better in 4-3. 100%. Kovacic, Loftus-Cheek, you heard it right. Mount, Gallagher, 4 proper players who really flourish in 4-3-3. Flourish, and this is the word. ठीक है, absolutely भाई, number 8 proper है 4-3-3 के लिए. Trust me, Mount is someone जो long shot लेता है. He should be playing in a 4-3-3. I genuinely believe that. ठीक है, Mount has to be playing in a 4-3-3. Perfect. You've seen at times, with Southgate he has implemented that. Mount is perfect. लेकिन हाँ, I would say that Mount or Gallagher, one of them, and you have Kovacic or Loftus-Cheek, and that makes it. हमें कुछ चाहिए ही नहीं midfielder और. We don't need. We just need a DM, a proper DM. Billy Gilmore can be a backup. Up front, obviously we have options a lot. लेकिन वही है, with 4-3-3 they'll have another attacker joining them. तो hopefully ज़्यादा quick passing हो. But Avdia की age हो गई है. Again, you can always learn, but with goalkeepers it's difficult at that age. You can say that. Football Kicks, thank you for joining. Ter Stegen भी अच्छा ball playing goalkeeper नहीं था. बारसा आके बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसका age, गिरी भाई, उसका age at the time when he came to Barca, he was still young. It depends on your learning ability as well. But okay, when I saw Vinicius Junior goal in 0.25 speed, it was offside. इंटर की सांप वाली जर्सी कहाँ से मिलेगी भाई? अरे बाय द वे, मैं बात कर रहा हूँ भाई जर्सी कंपनी से, तो हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीक, होपफुली नेक्स्ट मंथ, सॉरी, होपफुली विल गिव अवे एज वेल नेक्स्ट मंथ. And by the time हम 4K हो जाए, hopefully you guys get us to 4K here and 3.5K on the other channel, Almighty Sports Plus. So we'll get there for sure. And I am planning on doing membership as well next month से, तो देखते हैं by the end of this month itself. So let's see if we can do more conversations वहाँ पर भी. डियोंग न्यूज यार मैं हमें बता दिया ऑलरेडी, आप लेट आए हो, लेकिन एनीवे क्विकली गिविंग दैट 85 मिलियन यूरोस के फॉर्मल टॉक्स शुरू हो गए बिटवीन यूनाइटेड एंड डियोंग्स मैनेजमेंट एंड बारसा.
अब आई थिंक द फी दैट दे आर लुकिंग फॉर इज 75 million euros. अगर यूनाइटेड कन्विंस कर सकती है टू बार्सा एंड डियोंग्स मैनेजमेंट दैट ओके यू आर हैविंग 75 million euros, आप जाओ, आपको बेसिकली हम प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट सीजन हम चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेंगे, ही माइट बी टेम्प्टेड, लेकिन एज ऑफ नाउ ही इज स्टिल हेजिटेंट टू लीव बार्सा एंड ही वांट्स चैंपियंस लीग फुटबॉल. दैट इज द लेटेस्ट न्यूज. मुझे लगता है अगेन बॉल पार्क 80 million euros पे हो सकता है. आई रियली फील सो. Any team can play 4-3-3 or 4-4-2, but only Athletic Madrid can play 10-0-0. Well, interesting. Pedro और Fabregas भाई ये I think we mean Pedri और Fabregas. Pedro और Fabregas तो बहुत ही अलग प्लेयर थे. Pedri और Fabregas यार क्योंकि Fabregas ने जो करियर में किया है उससे Fabregas, लेकिन Pedri as a skill what he has a higher ceiling. तो Pedri will go higher if he continues this way. Simply put. लेकिन again different players. I won't compare them directly. What about Joao Felix? Where will he be seen next? I think unfortunately वो stuck रहेगा. They can't lose Joao Felix and Luis Suarez in the same transfer. Luis Suarez is available on free, by the way. So I can't see that happening. Luis Suarez will leave, definitely. Lekin Joao Felix will be staying, unfortunately. Belgium, yes, we will hopefully TV पर नहीं आने वाले यार, मैंने check किया है. लेकिन I'll try and follow that. But लेकिन France, Denmark definitely करेंगे. I am booking my hotel at Istanbul for next. Just like Klopp के बगल वाला रूम ले रहे हैं शायद यहाँ पर सब सुनिए. Yes, we will do a watch along as well because जैसे मैंने बोला इस हफ्ते के लिए मैंने बेसिक कंटेंट थोड़ा सा मैं चर्न कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट होपफुली विद द वीकेंड यू विल गेट बेसिक कंटेंट प्लस वॉच अलोंग ऑन बोथ द चैनल्स. लेकिन हाँ वॉच अलोंग तो वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड कंटिन्यू एज वेल इफ यू गाइस लाइक इट. आई एम श्योर यू लाइक इट. तो अभी देखते हैं, लेट्स सी इफ यू गाइस हैव गॉटन मी टू एटलीस्ट 175 लाइक्स. क्या बोलते हो? हो गए 175 लाइक्स? अरे भाई 100 लाइक्स भी नहीं हुए और 199 वोट्स है, मतलब आई कांट बिलीव इट. People, come on man, people do like the stream यार, do like the stream, certainly it helps, trust me it helps. वो चैनल को जनरली हेल्प करता है, हर एक स्ट्रीम को हेल्प करता है. तो यार बिना पूछे लाइक कर दीजिए. आप आते हो देखते हो, आई एम अज्यूमिंग यू लाइक माय कंटेंट इसलिए आते हो, मतलब दैट्स व्हाई प्लीज लाइक द स्ट्रीम, इट मींस अ लॉट. एंड ऑफ कोर्स एट स्पेशली पीपल इन इंडिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई नो इट्स पास्ट 2:30 इन द मॉर्निंग, स्टिल आप यहाँ पर हो तो हैट्स ऑफ भाई आप लोग को सबको. एंड ऑफ कोर्स लाइक आई से there'll be a lot of content coming on. बहुत busy season था, end of season. Of course this week I'm trying of churning content. थोड़ा next week से वापस से बैटरी रिचार्ज होके और भी आएगा. ऑलरेडी अभी रोज आ रहे हैं तो आप इमेजिन करो. तो काफी सारा कंटेंट आएगा. वी आर प्लानिंग, अच्छा यहाँ बोल ही देता हूँ तो थोड़ा सा we'll do a little bit of a World Cup series. We are planning a World Cup series, इतना मैं बोल सकता हूँ. Very interesting series हम प्लान करने वाले हैं. We are planning Who Am I, which is going to be a nice trivia. We are planning another short quiz as well in the coming months. We are definitely, doing a lot more cricket content on the other channel as well as football watch-alongs, much more. But not just that. I think we are having all the series, the top 5 series, last 20 years वाले series हो गए. There are a lot of playlists on Almighty Blues FC. तो हम काफी कवर करने वाले हैं और काफी इनोवेटिव कंटेंट लाएंगे. Along with obviously जो आप देख रहे हो वो previews and of course with the Nations League 4 मैच डेज है तो वो हम कवर करेंगे in terms of watch alongs, right? So we try and give our reviews यहीं पर, तो इसलिए अलग से वीडियो करने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, लेकिन you know what I mean, right? Absolutely. Gus Till is a great playmaker, great young. कोई नहीं, मैं actually I've not been following Gus Till much, but yes, of course मैंने सुना है. I have basically heard of him. I think if I'm not wrong, we watched him in the watch along, in the final one. I did remember watching. Correct me if I'm wrong. माना वो खेले थे right in the final against Roma. So I think that was one that I saw. पूरा कमेंट तो पढ़ लो. I asked, will you join as roommate as Chelsea fans? Oh, okay. Interesting, bhai. Interesting. Thank you, man. First of all, तो honor to be your roommate. Secondly, it's a dream. अगर हो जाए यार मस्त होगा वो. If given a chance, and I mean dream for Chelsea being in the finals. No pun intended, but honor anyway. If given a chance, who will you swap for Reece James? Jabbar, you will not like it. You will not like me saying it. I have told it already in the stream. Vinicius Junior. I've already told it indirectly. Vinicius Junior is the guy. हाँ आप बोलोगे why not Karim Benzema? Because Karim Benzema का I think he has 3 best years in him left. Maybe 2.5 best years at best. Vinicius has a decade left. तो Vinicius Junior any day. लेकिन again भाई Reece James नहीं जाने वाला.
Let's not get there. But again, I was surprised कि पूरे stream में आज नहीं आया question हो. Do you believe that Ronaldo kills the game? He makes a difference and नहीं यार दोनों ही मतलब are goats. I've told that time and again. Like they bring very different skills. Like Messi can be a free role player who kind of creates a lot. Ronaldo is I don't think there's a better finisher than Ronaldo. Simply that's period. And both दोनों ही आपके फुटबॉल टीम में होने चाहिए. तो imagine a team with both of them. I don't think that they cannot play together. Absolutely they can. 100%. होगा नहीं होगा कभी. That's a reality. Outside chance that might enter the Jong race with possibly Bernardo swap deal. Okay. ये हुआ था अर्ली ऑन इन आई थिंक मई थोड़ा सा टॉक्स हुए थे एंड आई नो दैट आज ही मैंने देखा है कि बर्नार्डो वुड वांट टू एक्चुअली गो टू बार्सा आई डोंट नो हाउ मच इज ट्रू बट लेट्स सी इफ सिटी वांट्स डियोंग I don't know, man. Matheus Nunes, I don't think he came on, did he? Matheus Nunes did not come on, right? He's a decent player as well. Does link to City in midfield. He played well for Feyenoord. Yeah, absolutely. I remember that. Manav. Chalo, nice. I just imagine Neymar, TA, and Salah under same flank. Oh my God. What a team, man. What a team. Would you rate a fully fit Dembele better than Mbappe? No. I would not. Again, different players. To be honest, Mbappe is more like a wide forward who's just brilliant. Dembele is a proper winger who is basically just brilliant at dribbling. He can be better at finishing. Even Mbappe can be. लेकिन मेरे लिए Mbappe still man any day. Come on, he's overall a better rounded player. As in at the end of the day, goals wins you games, and that's what you would say that I'll probably put more money than Mbappe winning us games than Dembele. लेकिन I'm not saying that I want Mbappe at any cost. I'm not saying that. लेकिन हाँ Dembele I think is more doable. That's more doable for Chelsea right now. So I don't mind having Dembele. हाँ थोड़ा इंजरी प्रोन भी है. That's an issue with Dembele. That's a problem with Dembele as well. लेकिन हाँ काफी देर हो गया है. अच्छा चलो एक और आ गया यार question. What if PSG owner get rid of Neymar and bring his idol CR7 to PSG? How will be the squad and what will be the okay? Honestly, मैं बोलूँ तो I cannot see CR7 at PSG because the guy that CR7 is, I think, if I'm not wrong, abhi bhi he wants to challenge himself and he sees himself as a leader. You can always see him even Portugal's side, maybe side में. I think Manchester United, he's having that aura. So I think he'll still help Eric Ten Hag a lot. He'll come. हाँ लेकिन नेमार लीविंग पीएसजी क्वाइट रियल हो सकता है. रोनाल्डिन्हो ने बोला है he has recommended I think Rafael Leao to I think PSG, City and Chelsea from reports again. So Rafael Leao can leave AC Milan now that they have money. They can buy good replacements and maybe a Sterling. Just putting it out there because a lot of English players are going. So थोड़ा domino effect हो जाएगा. Rafael Leao can come to PSG. I'm just putting it out there. Neymar can come to Chelsea. Just saying. लेकिन हाँ, just wishful thinking है. वो थोड़ा FIFA type of हो गया. Honestly, मतलब realistically देखो तो I don't see much changes. When it comes to CR7 Neymar this window. लेकिन हाँ, अब interesting रहेगा. Neymar अगर move होता है तो domino effect definitely रहेगा. मैं तो बोलता हूँ. Messi is a playmaker and CR exactly. In one line, that's the way I wanted to say. Absolutely, football Chris, you helped me there. Speak with ex-Bengaluru FC player Nishu Kumar for one. That's a good point. Yeah, Syed, do you follow me on social media? पता नहीं आप शायद आप हो social media में. If you're there, DM करिए. पता नहीं I might have lost your contact. मैं आपको follow भी करूँगा. So please send me a message on Instagram. और मुझे मैसेज करिए यार ये उनका कोई कांटेक्ट है निशु कुमार का तो प्लीज डू दैट आई आल्सो लुक इट अप लेकिन मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड कांटेक्ट एंड दैट्स अ ग्रेट कॉल लाइक इफ आई डिडंट नो दैट द पर्सन इज अ चेल्सी फैन I would love to but again even generally football fan yeah Bengaluru FC still why not yeah absolutely great watch along and again thanks to you all we'll see you tomorrow again yeah Euro Nations League very important in the World Cup year and much more content coming on both the channels like subscribe and मैं यहाँ पर बंद करने वाला हूँ our poll तो कहाँ गया आपका poll let's see whom are you predicting in terms of the transfers अरे भाई अपने 100 likes भी नहीं हुए I'm so shocked that I don't have 100 likes as much as I really thank you all I'm so shocked that we don't even have 100 likes tonight let's see man as in I hope that we get more people watching along because it's quite regular you all know it by now yeah try and support all our channels but definitely thanks for coming on as well yeah core gamer I've already signed this there is a lot of I've already signed this spoken about this lot of time now don't worry about it it's just started I think there's a lot of time for a lot of talks so I believe they will get a deal done I still believe it I feel it's not done and they'll find a way out it's Barca after all let's pretty sure that there'll be a sponsor for sure
ओके, परफेक्ट, ग्रेट। चलो मिलते हैं फिर। टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। यस, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, नॉट forget that ever. And congratulations for both Portugal and Spain. Good match, but great performance by Gavi and Sarabia, in my opinion. Not to forget Diogo Costa. Take care.